Kamal, you can start. Okay, Ji. So good evening to each one of you. And today we'll discuss some more standards about audit procedure specifically. Before I share my screen, let me ask you some questions. Question number one is whether before issue of audit report, you discuss the audit matters with your client. Answer is yes or no. Most of the people will say answer is yes. तो audit report issue करने से पहले जो भी audit के मसले हैं वो हम client से discuss करते हैं. Answer is yes. But the question arises, are you formalizing this discussion? If you are not formalizing this discussion, it is resulting in contravention of SA 260. SA 260 deals with communication of matters to those charged with governance. तो एक तो हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि how to formalize this discussion before issuing the draft audit report. Or I should correct myself, for issuing final audit report. Number second question is, which I will request each one of you is possible to reply in the chat box. The question is, do you have the idea about what is the presumption? What is the presumption that we need to keep in mind while carrying out vouching verification of revenue? जब हम रेवेन्यू ऑडिट करते हैं, सेल्स टर्नओवर ऑडिट करते हैं, तो क्या प्रिजम्पशन है जो हमें हमेशा कंसीडर करनी है? व्हाट इज द प्रिजम्पशन? एनी आइडिया? In my experience, and recently when Nafra also noticed, most of the auditors are not taking care of this presumption, and hence it's a kind of misconduct also. तो एक तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम सेल्स टर्नओवर का ऑडिट करते हैं तो क्या प्रिजम्पशन हमें कंसीडर करना होता है. विल डिस्कस दैट प्रिजम्पशन आल्सो. Number third, very important question for which I will demonstrate on Excel also how to work on Excel. जब आप auditing करते हैं, तो we go for sample checking. So let us assume we have thousands of invoices, and for thousands of invoices, it may be practically not possible to vouch and verify each and every invoice. So question मेरा आपसे ये है कि if possible to answer this question, reply in the chat box. How you make a sample selection? आप sample selection कैसे करते हैं? Whether you make a sample choice by virtue of कि मेरे दिल ने क्या कहा, what is my heart saying, or is something scientific is there for making a sample selection. तो इसके अलावा बहुत सारी केस स्टडीज आज भी डिस्कस होंगी. एक विजय जी का क्वेश्चन था जब हमने स्पीच शुरू करी थी अपनी, इससे पहले बात कर रहे थे कि जो कल केस स्टडीज हुई थी वो मिली नहीं है. तो केस स्टडीज में कंपाइल कर ना आपको सबको एक साथ भेजूंगा बिकॉज मैनी केस स्टडीज आर पेंडिंग. तो बी श्योर अबाउट दोस केस स्टडीज, वो आपको मिल जाएंगी सोनर और लेटर. बट फिलहाल मुझे ये बताइए, द क्वेश्चन इज हाउ यू मेक अ सैंपल चॉइस. So if I take an example, you have hundreds of invoices. Out of hundreds of invoices, you are going to say vouch 50-60 invoices. तो 50-60 invoices का जो sample आप draw करते हो, इसके पीछे basis क्या होता है? Is the base your heart, or is the base some scientific method or mathematical method? And any response from any of the participant, so that I can move to the screen sharing. Okay, so let me share the screen and I will discuss one by one. सबसे पहले हम शुरू करते हैं communication of matters to those charged with governance. Just a second, let me press screen sharing button. विजय स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ, visible. So you can take a note of this standard which we will discuss now. SA 260, it deals with communication of audit matters to those charged with governance. First of all, please understand that the words used are those charged with governance and not the management. So what we need to understand, what is the difference between management and those charged with governance? So rather than going for the definition, let us understand as a matter of illustration. In a company, we have board of directors, and in such company, we do have audit committee also, CSR committee also, shareholders committee also. So this board of director is management, and various committees of the board of directors, they are called as those charged with governance. Now, if you are the auditor of a proprietorship firm or a partnership firm, maybe it's a possibility that there is no sub delegation. तो वहां पर क्या होगा, proprietor और partners management भी हैं और those charged with governance भी हैं. So in unstructured organization or unorganized organizations, the management and those charged with governance may be same. Now, what is the objective of SA 260? So as a layman, if we understand what SA 260 says, it would be in the best interest of auditor as well as auditee that a draft audit report is discussed between auditor and the auditee before issuing the final audit report. The benefit will be you will be able to achieve real purpose of audit. Now, what is the real purpose of audit? The real purpose of audit is to enhance degree of confidence of users of financial statements. तो आपके हिसाब से, आपकी अंडरस्टैंडिंग से, which audit report is better?
a qualified audit report for unnecessary stuff, or a clean report with a good stuff? Quite obviously, clean report with a good stuff. Let us take an example. आपने ऑडिट किया और ऑडिट करने के बाद आपको ये पता चला कि क्लाइंट ने जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया हुआ है दैट इज नॉट एज पर द यूजफुल लाइफ गिवन बाय शेड्यूल सेकंड। तो आपने क्लाइंट से कहा कि जो प्लांट एंड मशीनरी का यूजफुल लाइफ है वो शेड्यूल सेकंड के हिसाब से नहीं है और मैं रिपोर्ट क्वालिफाई करूंगा, लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट करते हैं एज पर दी शेड्यूल सेकंड यूजफुल लाइफ तो रिपोर्ट आपकी क्लीन रिपोर्ट आ जाएगी। तो क्लाइंट ने क्या कहा कि ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं और मैं अपने अकाउंटेंट को बोलकर जो यूजफुल लाइफ है वो एज पर शेड्यूल सेकंड लेकर डेप्रिसिएशन को रिवाइज करवा देता हूं। व्हाट विल हैपन इन सच अ केस? यू विल इशू द क्लीन रिपोर्ट। So that's the objective of the standard. If there are certain audit observations which, if communicated to the client, can be rectified, it will be a better synergy of auditor and auditee. And with this very objective, SA 260 says it would be in the best interest that a draft audit report is discussed by the auditor with the audited client before issuing final audit report, so that the real purpose of audit can be achieved in best spirit. And that is what SA 260 deals with. SA 260 thus has been issued to provide guidance about what audit matters should be discussed with the client in this regard. तो आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है और इसको फॉलो भी करना है, मान लीजिए मैं क्लाइंट हूं आपका, मैं आपके ऑफिस में आता हूं और मैंने आपसे पूछा कि सर मेरी कंपनी का ऑडिट कंप्लीट कर दिया आपने। आपने कहा कि ऑडिट कंप्लीट कर दिया लेकिन कुछ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस हैं जो कमल आपको ठीक करानी है या डील करना है। तो अभी जनरली क्या होता है, जो ये बातें होती हैं ओरली होती हैं। Now, what we need to do by virtue of SA 260, which is mandatory in nature, we have to formalize this communication. Rather than discussing on table, you have to bring this in a paper form as a documentation part. And this formalization is technically called as communication of matters to those charged with governance. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि ऐसे क्या क्या मैटर्स हो सकते हैं जो हम क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, SA 260 says the following matter should be communicated. तो जो आप लेटर भेजेंगे अपने क्लाइंट को फाइनल ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले, उसके अंदर कौन कौन से मैटर्स हो सकते हैं? दिस इज द लिस्ट ऑफ दोज मैटर्स। नंबर 1, स्कोप ऑफ ऑडिटर्स ड्यूटीज, in which you will mention that we have carried out your audit as per the requirements of Companies Act in a systematic and independent manner. तो एक तो क्लाइंट का आप ये बता देंगे, दूसरा बता देंगे what are your accounting policies. So we will write in the letter selection and application of accounting policies. Then number 3, management judgments leading to any judgmental misstatement. So in the letter we will write that we came to an observation that the depreciation has been provided as per useful lives which are different from the useful lives given by schedule second. So this kind of thing will be mentioned in the letter. Then audit adjustments arising out of auditor's observation. That means you will tell the management or TCWG as the case may be that because of my observation, I found that certain adjustments are warranted in financial statements. If you will do, then you can expect some modification in the audit report. What is a modification? For example, you may change the audit report from qualified to unqualified or unqualified to qualified as the case may be. Then you will discuss with them the audit procedure, that is compliance procedure and substantive procedures. Now, what is compliance procedure? Compliance procedures are those procedures which are designed to evaluate whether internal controls are good or bad. तो जब आप ये चेक करते हैं ना कि कंपनी का या क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल अच्छा है कि नहीं, जो प्रोसीजर आप तब अप्लाई करते हो वो होता है कंप्लायंस प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या क्लाइंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टाइम से बनाता है कि नहीं बनाता, वो कंप्लायंस प्रोसीजर है, बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग द बैंक बैलेंसेस एंड रिकंसिलिएशन देयर टू। देयर इज सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो जब आप वाउचिंग करते हैं, वाउचिंग इज कॉल्ड एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर। जब आप रेशियो एनालिसिस करते हैं, इट इज कॉल्ड एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर। जब स्टॉक काउंटिंग करते हैं, स्टॉक काउंटिंग इज कॉल्ड एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर। डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर। Then you will discuss entry cases, that is difficulties faced during the audit by the auditor, like limitation on scope. तो आप क्लाइंट को यही बताओगे कि जब मैंने आपको ऑडिट किया तो मुझे कौन कौन सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। आई विल शो द लिस्ट ऑफ डिफिकल्टीज एज इलस्ट्रेशन आल्सो। देन लीगल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू द एंटिटी, आप बताएंगे क्लाइंट को कि आपका ऑडिट जब हमने किया तो नॉट ओनली द कंपनीज एक्ट बट अदर लॉज आर आल्सो एप्लीकेबल। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एज पर SA 260 दीज आर मिनिमम एलिमेंट्स दैट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। तो कम से कम आपको ये वाले मैटर्स तो अपने कम्युनिकेटिव लेटर में डालने ही डालने हैं। अप टिल नाउ इफ आई समराइज ऑल दिस स्टफ, अगर एक सिंगल सेंटेंस में समराइज करें इसको, सिंपल सी बात ये आती है कि आप अपना फाइनल ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले जो भी आपके ऑडिट ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी आपके ऑडिट मैटर्स हैं, वो क्लाइंट से अभी तक हम टेबल पे डिस्कस करते हैं।
उसे टेबल पर डिस्कस करना ही नहीं करना आपका चॉइस है, बट प्लीज फॉर्मलाइज ऑल दैट डिस्कशन टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल, एंड दिस इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 260। अभी तो पीयर रिव्यू भी एप्लीकेबल हो गया होगा काफी लोगों पर। तो जब पीयर रिव्यूअर आपके ऑफिस आएगा रिव्यू करने के लिए, ही और शी में आस्क यू प्लीज फर्निश विद द लेटर बट यू कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट लर्निंग ऑफ टुडे सेशन इज प्लीज फॉर्मलाइज द कम्युनिकेशन रिगार्डिंग ऑडिट मैटर्स इन परसुएंस ऑफ एसए नंबर 260। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जब आप कम्युनिकेशन करेंगे वाला तो कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो आपको बताने हैं एज फार एज डिफिकल्टी फेस्ड ड्यूरिंग द ऑडिट बाय द ऑडिटर इज कंसर्न। लेट मी शेयर दोज एग्जांपल्स आल्सो। Give me a moment. So for this purpose, we have essay number 240. Now, essay number 240 says that these are the list of those items which may lead to difficulties in audit exercise, and this may also result in problematic or unusual relationship between auditor and management. तो ऐसे कौन कौन से मसले हो सकते हैं जिसकी वजह से ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनयूजुअल रिलेशनशिप हो या प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप हो, या जिसकी वजह से ऑडिट करने के दौरान डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती हो। एंड फॉर दिस पर्पस एसए 240 says what can be those matters regarding difficulties during the audit. Number one, let me give the mouse pointer also. Number one, denial of access to records, facilities, etc. for seeking evidence. For example, not providing access to internet. तो आपका स्टाफ वहां पर गया क्लाइंट के पास और कहा कि हमें वाईफाई का पासवर्ड दे दीजिए, बट उन्होंने मना कर दिया चीज के लिए। सो इट इज काइंड ऑफ अ problematic relationship. Then undue time pressures to resolve complex issues. For example, continuous request by the management to complete audit at the earliest. तो जैसे आप अभी कम्युनिकेट करेंगे अपने मैनेजमेंट को तो उसमें लिखेंगे आप ये चीज कि although we were appointed as the auditors to carry out audit procedures as per our professional judgment, but consistently management was pressurizing us to complete the audit at the earliest. अब ये लैंग्वेज आपको कितनी हार्श लिखनी है, कितनी पोलाइट रखनी है, वो आपका अपना अपना प्रेरोगेटिव होगा। The number third, complaints by the management about conduct of audit team. For example, article assistants wasting times in gossips. तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका क्लाइंट है आपसे कहे कि आपका स्टाफ हमारे पास आता है लेकिन काम ठीक से नहीं करता है, टाइम वेस्ट करता है। दिस ऑल्सो नीड्स टू बी एड्रेस्ड if any such kind of thing is coming from the management. Then is key IT and other operational areas, systems, etc. denied to be accessed. For example, the client is not providing computers for carrying out audit examination. Then unwillingness by management to permit auditor communicate TCWG. For example, management requests the auditor for not informing TCWG about funds misused by the managing director. तो आपके ऊपर प्रेशर है कि आप ये वाला कम्युनिकेशन जब करें तो उसमें ये एक या दो आइटम्स ना बताएं। Then tolerance of violations of entities code of conduct. For example, using Facebook in office hours. So whatever code of conduct is there, it is not being followed. That also need to be captured in your such communication. Ultimately, what is coming out? Let me repeat one thing once again. There are two main things which we need to always keep in mind. Number one, as per SA 260, it would be in the best interest of auditor and the auditee that before final audit report is issued, a draft audit report is being discussed with the client along with the difficulties faced by the auditor for carrying out the audit. Number one. Number second, what we need to understand, ऐसा नहीं है कि अब तक आप करते नहीं थी ऐसा, but this was happening on the table. Now we need to formalize this whole communication, and to formalize this communication, we need to follow SA 260. So in a way, SA 260 is a formal way of channelization of communication regarding audit matters between the auditor and auditee. But you need to have a precaution. This SA 260 is mandatory in nature. तो ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपके लिए मैंडेटरी है। आपके ऑफिस में अगर पीयर रिव्यू आएगा या कल को क्वालिटी रिव्यू आपका हो जाता है तो वहां पर ये आपसे कम्युनिकेशन मांगा जाएगा दैट प्लीज फर्निश मी अ कॉपी ऑफ सच कम्युनिकेशन। आई विल स्टॉप माई सेल्फ ओवर हियर। आपका इस वाले ऐसे 260 में क्वेश्चन है तो पूछिए। So you can put your question in the chat box so that I can answer this question and move ahead. I believe there is no question on SA 260. अच्छा एक चीज मैं बता दूं आपको, there is no prescribed format. There is no prescribed format on communication of this matter to TCWG. तो अगर आप गूगल वगैरह पर सर्च करते हैं या कहीं ढूंढते हैं कि इसको कोई लेटर मिल जाए, तो लेटर मिल भी जाएगा तो ये दिमाग में बात रखिएगा कि such kind of format is not prescribed by SA 260. So you can simply prepare your own letter. For example, to the management, ABC Private Limited, address, subject, communication of audit matters. Then you can write, dear sir, with reference to statutory audit of the financial year 2324, we bring to your notice the following audit matters. तो ये लेटर आप अपनी मर्जी से अपनी लैंग्वेज का बना सकते हैं, कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट या कोई प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज नहीं है इसका। नाउ लेट मी कम टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच आई स्टार्टेड विद द स्पीच आल्सो। कितने लोग मुझे बता सकते हैं
कि what is the presumption that we need to keep in mind as statutory auditors when we carry out statutory audit for revenue purposes. There is a question by Chandramohan Mishra ji. Is it also required if we issue clean report? Chandramohan sir, जो ये कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं ना, इसका ऑडिट रिपोर्ट से डायरेक्ट नेक्सस नहीं है. हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट क्लीन हो, लेकिन आपने ऑडिट करने के दौरान काफी डिफिकल्टीज फेस की हो, तो तब तो आप कम्युनिकेशन करेंगे ही. तो अल्टीमेटली बट वी आर डिस्कसिंग ऑडिट मैटर्स. ऑडिट मैटर्स के अंदर ना केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैटर्स आएंगे, बल्कि वो सब मैटर्स भी आएंगे जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इम्पैक्ट कर सकते हैं. जैसे एक स्क्रीन आप देख रहे हैं अभी, डिफिकल्टीज फेस ड्यूरिंग द ऑडिट. तो मे बी अ पॉसिबिलिटी कि योर रिपोर्ट इज क्लीन रिपोर्ट, but still while carrying out your audit function you face some difficulties, so those difficulties need to be communicated to management or TCWG as the case. Am I clear, Chandramohan sir? Okay, so let me come to this other question which I was stating. What is the presumption that we need to keep in mind while carrying out audit of sales turnover? पूरे हमारे पास total 45 standards हैं. Out of those 45 standards, only one standard is there which is dealing with presumption. तो presumption क्या है? And I must say, out of my little experience, most of the chartered accountants are not complying with this standard. So what we need to understand, we have asset 240 again. Now let me show you that presumption part. Just give me a moment. आप चाहें तो फॉर द टाइमिंग मैं आपको पीपीटी तो भेजूंगा ही. फॉर द टाइमिंग आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या प्रिंट नोट कर लीजिएगा. Presumption under asset 240. Asset 240 deals with consideration of frauds and errors in audit of financial statements. वैसे 240 जो बात करता है वो ये करता है कि जब आप ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो फ्रॉड के बारे में और एरर के बारे में क्या बातें ध्यान रखनी है. In this essay 240, para number 46 is extremely important. And I must tell you this thing, essay 240 needs to be complied not only for statutory audits, but for tax audit also, for GST audits also. Now, what does para 26 says? Now, be very careful with the red fonts. Para 26 says, when identifying and assessing the risk of material misstatement, risk means the possibility. You can use the word possibility rather than the word risk. When identifying and assessing the possibility of material misstatements due to fraud, the auditor shall, the word is shall, based on presumption that there are risk of fraud in revenue recognition, evaluate which types of revenue transactions or assertions give rise to such risk. If I say the layman, पैरा नंबर 26 ये कहता है, पैरा नंबर 26 ये कहता है कि जब आप रेवेन्यू का ऑडिट करेंगे, यानी कि सेल्स टर्नओवर का ऑडिट करेंगे, तो ये प्रिजम्पशन लेकर चलेंगे कि इस रेवेन्यू में या सेल्स टर्नओवर में फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी है. I repeat, if I say this thing as a layman in English, I will say para 26 is connoting that being a statutory auditor, when you will be doing audit of sales turnover or revenue for that matter, you will always presume that there are possibilities of fraud that may exist in revenue. तो आपको जो अपना माइंडसेट बनाना है वो ये बनाकर चलना है कि रेवेन्यू में फ्रॉड मिल सकता है, और इसी माइंड सेट के साथ आपको रेवेन्यू का ऑडिट करना है. अब इसी चीज को पैरा 47 जो है एक्सपाउंड करता है. पैरा 47 ऑफ एसए 240, दैट इज सेकंड बुलेट पॉइंट. पैरा 47 of SC 240 specifies the documentation required when the auditor concludes that the presumption is not applicable in the circumstances of the engagement and accordingly has not identified revenue recognition as risk of material misstatement due to fraud. The primarily what para 47 says कि अगर आप ये कहते हो कि फ्रॉड की पॉसिबिलिटी नहीं है, आप उसको रिबट करते हो, प्रिजम्पशन को रिबट करते हो, तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि ऑन व्हाट बेसिस यू आर रिबटिंग द प्रिजम्पशन. For example, अगर मैं पैरा नंबर 830 की बात करूं, पैरा नंबर 830 has given some indication. This paragraph says the presumption that there are risk of fraud in revenue recognition may be rebutted. For example, the auditor may conclude that there is no risk of material misstatement due to fraud relating to revenue recognition in the case where there is a single type of simple revenue transaction, for example, leasehold revenue from a single unit rental property. So this is one of the example, and you need to evaluate on case by case basis कि आप किस तरीके से रिवर्ट कर सकते हो. तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, आपके वर्किंग पेपर्स में डॉक्यूमेंटेशन में एक स्टेटमेंट ये होना ही चाहिए कि क्या आपने प्रिजम्पशन रिगार्डिंग फ्रॉड पॉसिबिलिटी इन द रेवेन्यू रिवर्ट किया कि नहीं किया. अगर रिवर्ट किया तो उसका बेसिस क्या था. पीए रिव्यू होगा तो वो भी ये फाइल चेक करेंगे आपकी, क्वालिटी रिव्यू होगा तो वो भी फाइल चेक करेंगे आपकी. बट वन थिंग इज सर्टेन, इन द एंटायर गैमेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, SC 240 is only the standard in which it is being written
कि जब सेल्स टर्नओवर का ऑडिट करेंगे तो ये मान के ऑडिट करेंगे कि सेल्स टर्नओवर में फ्रॉड होने की संभावना है ही, एंड इसको आप कितना रिबट करते हो, कितना रेफ्यूट करते हो, वो डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ आपका 1 मिनट के लिए, कोई आपका यहाँ पर क्वेश्चन है तो पूछिएगा। In my experience, what I have found in most of the audit files as working papers, this kind of presumption rebuttation is not there. तो ये प्रिजम्पशन रिबटल कॉन्सेप्ट अगर आपके वर्किंग पेपर्स में नहीं है तो आपका वर्किंग पेपर भी इनकम्प्लीट वर्किंग पेपर है। तो जब भी आपको टाइम मिले आप ICAI.org की साइट से SC240 डाउनलोड कीजिएगा, एंड पैरा 26, पैरा 47 एंड पैरा 830 को एक बार सर्च करके पढ़िएगा। Now, having said that, let me ask you another question, and I would be happy to have the answers in the chat box. The question is, आप जब सैंपल सिलेक्शन करते हैं तो उसका बेसिस क्या होता है? क्या आप अपने अंदाजे से एस्टिमेट बेस पे सैंपल बनाते हैं या कोई उसका साइंटिफिक बेसिस होता है? यस, एनी आंसर? व्हाट इज द बेसिस ऑफ सैंपल सिलेक्शन? So for that very purpose, let me show the screen first of all. पहले हम सैम्पलिंग को समझते हैं, उसके बाद एक्सेल शीट पर वर्किंग करके मैं दिखाता हूँ आपको। So for audit sampling purposes, we have SA 530. First of all, please understand, sample checking is nowhere mandatory. Sample checking is nowhere mandatory. तो कोई आपसे कहे कि सैंपल चेकिंग करना मैंडेटरी है, वो एक गलत स्टेटमेंट है। सैंपल चेकिंग करना मैंडेटरी कहीं पर भी नहीं है। सैंपल चेकिंग करना है कि नहीं करना है, दैट इज सोलली द प्रेरोगेटिव ऑफ द कंसर्न ऑडिटर, एंड दैट प्रेरोगेटिव इज बेस्ड अपॉन हिज प्रोफेशनल जजमेंट। तो अगर ऑडिटर ने ये डिसीजन लिया कि मुझे सैंपल चेकिंग करना है, तो ये ऑडिटर का अपना रिस्क है, और इसी रिस्क को हम बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर? द प्रॉब्लम हियर इज कि सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, नंबर वन, एंड नंबर सेकंड, हाउ टू मेक अ सैंपल चॉइस। तो आई विल स्टार्ट विद सैम्पलिंग रिस्क। नाउ व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क प्राइमरीली? अगर हम इसको आसान भाषा में समझें, व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क? Sampling risk is the possibility that the opinion which we arrived at on the basis of a sample choice would had been different if I would had examined entire set of items. तो मान लीजिए मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स के 100 लिस्ट था। I was having 100 ledgers in the category of trade receivables. Out of 100 ledgers, मान लीजिए कि मैंने केवल 90 ledgers को ही स्क्रूटनाइज किया। 90 लेजर्स स्क्रूटनाइज करने से मेरा जो ओपिनियन बना वो ये बना कि ट्रेड रिसीवेबल्स आर फेयरली स्टेटेड। लेकिन अगर मैंने 100 लेजर्स को स्क्रूटाइज किया होता, 100% चेकिंग की होती, तो शायद मेरा ओपिनियन ये बनता कि कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं फेयरली स्टेटेड नहीं है। तो इन अ वेरी चाइल्डिश सेंस, सैम्पलिंग रिस्क इज इक्वल टू ओपिनियन बेस्ड अपॉन टोटल पॉपुलेशन minus opinion based upon selected population. That is what sampling risk is. Now, what kind of sampling risk the auditors can encounter? For this purpose, SA 530 says, what is sampling risk? Sampling risk is the risk that auditor's conclusion based on sample may be different from the conclusion if the entire population were subjected to same audit procedure. तो अगर मैंने 100 इनवॉइस को वाउच किया होता, मेरा ओपिनियन क्या होता, और मैंने 90 इनवॉइसेस को ही चेक किया, तो मेरा ओपिनियन क्या आया। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग रिस्क इन अ वेरी लेमन सेंस। अब जब सैम्पलिंग रिस्क होगा तो वी कैन हैव सम एरोनियस कंक्लूजन्स। Now, what can be the erroneous conclusions? The erroneous conclusions could be, I can conclude that internal controls were more effective, but in fact they were not such kind of effective. Or I can conclude that material misstatement does not exist when in fact they were existing. दोबारा सुनिएगा, अगर मैं सैंपल चेकिंग करता हूं तो मेरे पास कौन कौन से गलत कंक्लूजन आ सकते हैं। मेरा माइंड जो है कौन कौन से गलत कंक्लूजन से पहुंच सकता है। नंबर वन, मैं ये कह सकता हूं या मैं ये गलत कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि कंट्रोल्स जो हैं वो इफेक्टिव थे, लेकिन वास्तविकता में कंट्रोल्स इफेक्टिव थे ही नहीं, या कंट्रोल्स जो हैं वो इफेक्टिव नहीं है लेकिन वास्तविकता में वो इफेक्टिव हैं। सो कंट्रोल्स, देखिए दोनों कंपेयर कीजिएगा। कंक्लूजन एरोनियस क्या क्या हो सकते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स मोर इफेक्टिव देन एक्चुअली दे वर, और लेस इफेक्टिव देन एक्चुअली दे वर। सिमिलरली, अगर मैं वाउचिंग कर रहा हूं ट्रांजैक्शंस की, तो मैं क्या गलत कंक्लूजन निकाल सकता हूं? दैट material misstatement does not exist when in fact it does exist, or material misstatement exist when in fact they were not existing. So if this kind of first box, if this kind of erroneous conclusion is there, if this kind of erroneous conclusion is there, then it may lead to inappropriate expression of audit opinion.
And if this kind of erroneous conclusion is there, then it may lead to additional work. Now, whenever this sampling risk is there, you can take a note of my words. Auditor ultimately will remain responsible and liable for this sampling risk he or she has undertaken. जैसे मैंने पहले बताया, सैंपल चेकिंग करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप सैंपल चेकिंग करते हैं तो जो भी ओपिनियन के अंदर पॉसिबिलिटी आती है गलती होने की, उस गलती के लिए केवल और केवल ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा. Now the question arises how to make a sample choice. See, primarily we have two methods of making a sample choice. One is random method and second is systematic method. Now when I say random method means arbitrary method. For example, जैसे क्लासरूम में होता है ना, क्लासरूम में कोई टीचर है और उसके सामने 100 बच्चे बैठे हैं और क्लासरूम में टीचर को कोई सवाल पूछना है, तो आउट ऑफ 100 ऑल द स्टूडेंट्स हैव इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. तो जब इस तरह का कोई सिनेरियो है, रैंडम इसको बोला जाएगा. बट व्हेन वी कम टू साइंटिफिक बेसिस या मैथमेटिकल बेसिस, इट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक वे ऑफ हैविंग अ सिलेक्शन. आप में से कितने लोग जानते हैं दैट इन एक्सेल वर्कशीट हाउ टू मेक अ सैंपल चॉइस? एनी आइडिया? रैंडम तो ये हो गया कि मैंने अपने प्रोफेशनल जजमेंट से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ इनवॉइसेस को सिलेक्ट कर लिया. लेकिन अगर मुझे एक सिस्टमैटिक तरीके से मैथमेटिकली सैंपल चॉइस बनाना है, तो उसके लिए मुझे कोई बता सकते हैं कि हाउ दिस थिंग हैपेंस ऑन एक्सेल वर्कशीट एंड व्हाट इज दैट मैथमेटिकल टेक्निक और सम स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला दैट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सैंपल सिलेक्शन? अभी मैं करके दिखाऊंगा भी आपको. एंड बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब मैं आपको सब चीजें यहाँ पर समझा रहा हूँ, प्लीज स्टार्ट यूजिंग दैट मैथमेटिकल मॉडल which is called as Pareto analysis, Pareto, Pareto analysis. Try to make a sample choice with the help of Pareto analysis, and whatever sample selection you have made that way, please document the same in the working papers. तो उसका एडवांटेज क्या रहेगा? कल को सैम्पलिंग रिस्क के अंदर कुछ गलती मिलती भी है तो यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस दैट यू आर हैविंग रीजनेबल रीजंस टू मेक अ सैंपल चॉइस. So before I show you the working through a ledger, I will take a ledger in Excel और ledger से sample selection कैसे करते हैं हमको भी समझाता हूँ. बट उससे पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा चैट बॉक्स में. let us assume internal controls are strong. आपने जिस क्लाइंट का ऑडिट करना है, आपने पता किया कि उस क्लाइंट के जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं स्ट्रांग हैं. अगर किसी क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, तो आप जो सैंपल सिलेक्ट करेंगे उसका साइज बड़ा रखेंगे या छोटा रखेंगे? Whether the sample size will be a larger size or a smaller size, considering the situation where controls are strong controls. What is your view? अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं तो सैंपल सिलेक्शन के अंदर साइज बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है? आंसर विल बी स्मॉल. अगर मेरा इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, अगर मेरा इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो मैं आइटम्स को कम से कम चेक करूंगा. अगर मेरा कंट्रोल बुरा है या वीक है तो मैं ज्यादा से ज्यादा आइटम चेक करूंगा. एम आई क्लियर भूपेंद्र जी? एम आई क्लियर नाउ? इफ माई कंट्रोल्स आर वीक, दैट मीन्स the things may go wrong, and to detect whether things have gone wrong or not, what I will do, I will check more and more items. On the other hand, if the controls are strong, then I will have much more trust on the transactions, and I may be happy by checking some, few items. And that is what the relationship of controls and sample checking is there. तो क्या करना है आपको? जब भी आप sample choice बनाते हैं, besides what I will be showing on Excel, always make an assessment of internal controls. If internal controls are strong, you can go ahead with further vouching with smaller items, else you have to select a larger size. तो मैं आपको एक्सेल शीट पे कुछ करके दिखाता हूँ अभी, और आप उसको समझ लीजिएगा. कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. विजय जी, एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा, एक्सेल शीट नजर आ रही है आपको? कैन एनीवन प्लीज कंफर्म वेदर एक्सेल शीट? या दिख रही. ओके. तो ऑडियंस, यू कैन सी वन एक्सेल शीट इज देयर. दिस इज द लेजर अकाउंट फॉर एडवर्टाइजमेंट. ये एक एडवर्टाइजमेंट का लेजर शीट है. बड़ा ध्यान से समझिएगा, जिनको ऑलरेडी आता है वेल इनफ, बाकी लोग एक बार ध्यान से समझिएगा. तो क्या करना है आपको? जैसे मैंने क्या किया है, टैली सॉफ्टवेयर से जो लेक्चर है एडवर्टाइजमेंट का, उसको एक्सेल में इंपोर्ट कर दिया. अब एक्सेल में इंपोर्ट कर लिया इसको. उसके बाद मैं क्या करूंगा, जब ये आ जाएगा, आई विल सिलेक्ट फ्रॉम दिस डेट, और मैं यहां तक सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, ग्रॉस टोटल तक, और ये पूरा सिलेक्ट कर लूंगा लेजर. तो जस्ट सी आई एम सिलेक्टिंग द एंटायर गैमेट ओवर हियर. तो मैंने ये पूरा लेजर रो नंबर 1 से लेकर रो नंबर लास्ट तक सिलेक्ट कर लिया और ग्रॉस टोटल ले लिया मैंने यहाँ पर. नाउ व्हाट आई विल डू, ये सिलेक्ट करने के बाद यू विल गो टू इंसर्ट
कहीं भी आपसे कुछ मिस हो जाए ना मेरी वॉइस, तो मुझे बता दीजिएगा. फर्स्ट यू विल सिलेक्ट द आइटम्स which I believe up till gross total is sufficient. Although you can select till last also. मैं बल्कि लास्ट तक ही कर लेता हूँ, जो भी आपको ठीक लगेगा वैसे कर लीजिएगा बाद में. तो मैंने A to Z एंटायर टेबल को सिलेक्ट कर लिया. अब देखिए यहाँ पर सबके सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया है. उसके बाद क्या करना है हमें, विल गो टू इंसर्ट. इसमें देखिए पाइवेट टेबल आएगा. विल गो टू पाइवेट टेबल. आप चाहे तो मैं थोड़ा स्लोली चलता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि अगर मैं एक्सेल ये वर्कशीट सेव कर भी लूंगा ना, तो भी आपको जब ये मिलेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, बिकॉज पाइवेट टेबल अपने आप गायब हो जाएगा. तो आप जाएंगे इंसर्ट पर, इंसर्ट में पाइवेट टेबल. पाइवेट टेबल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे, फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज, फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा और सोर्स. हमें क्लिक करना है फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज, क्योंकि टेबल सामने पड़ा ही हुआ है. आप जैसे क्लिक करेंगे फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज पर, एक नया शीट खुद ब खुद तैयार हो जाएगा. जस्ट सी हियर, सिलेक्ट टेबल और रेंज. सिलेक्ट मैंने पहले से ही कर रखा है, तो जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा दिस थिंग. फिर आप यहाँ पर ऑप्शन ले सकते हैं, चूज वेयर यू वांट टू हैव द पाइवेट टेबल बीइंग प्लेस्ड, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट. ऑलवेज सिलेक्ट न्यू सो दैट इट इज मैनेजेबल. तो इस पे क्लिक कर दिया न्यू पर, और यहाँ पर फिर ओके पे क्लिक कर देना है आप. अब देखिएगा एक नई शीट आ गई है यहाँ पर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू वंस दिस न्यू शीट कम्स इन, अब देखिए यहाँ पर कुछ फील्ड्स आ रहे हैं. इस फील्ड के अंदर यू हैव टू सर्च ग्रॉस टोटल. मुझे ग्रॉस टोटल से ही सैम्पलिंग करनी है, सो यू विल सिलेक्ट ग्रॉस टोटल. नाउ बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम डूइंग. ग्रॉस टोटल, सॉरी, ये जो ग्रॉस टोटल है, इस ग्रॉस टोटल को एक बार आप ड्रैग करेंगे रोज में यहाँ पर. तो व्हाट आई डिड, ये ग्रॉस टोटल आ गया रोज में. नाउ ग्रॉस टोटल को आप ड्रैग करेंगे फिर वैल्यूज में, एंड यू विल ड्रैग दिस थिंग 3 more times. तो 4 बार ड्रैग करना है वैल्यूज में और एक बार ड्रैग करना है रोज में. तो ग्रॉस टोटल को मैं एक बार फिर से यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ, फिर एक बार ड्रैग कर लेता हूँ, एंड वन लास्ट टाइम. तो जस्ट सी वी हैव these 5 columns over here. तो सब कुछ ग्रॉस टोटल पे ही हो रहा है. अभी क्या करना है, जो आपका ये कॉलम नंबर ए है, इसमें आप सेल पॉइंटर रखिएगा एंड डू द राइट क्लिक. राइट क्लिक के बाद, सॉरी यहाँ पर नहीं करते हैं अभी, जस्ट अ मोमेंट. सेकंड कॉलम में सेल पॉइंटर रखिएगा एंड डू द राइट क्लिक. राइट क्लिक के बाद क्या करना है, जस्ट सी इन द थर्ड कॉलम यू विल डू द राइट क्लिक, एंड देन यू विल हैव समराइज वैल्यूज बाय. जस्ट सी समराइज वैल्यूज बाय, और एक आएगा आपको शो वैल्यूज बाय. आप जाएंगे शो वैल्यूज बाय पर और क्लिक करेंगे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल. यहाँ परसेंटेज आ जाएगा. फिर आप आ जाएंगे कॉलम नंबर डी में, राइट क्लिक कीजिएगा, देन आएगा शो वैल्यूज बाय एंड समराइज वैल्यूज बाय. समराइज वैल्यू में जाएंगे काउंट आ जाएगा, यहाँ पर काउंट ले लीजिएगा. फिर लास्ट कॉलम में आएंगे, काउंट करेंगे पहले इसको, एंड इस काउंट को परसेंटेज में निकालेंगे, देन शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल. अभी आप यहाँ तक देखिए, यहाँ तक समझ में आता है आपको, ये क्लियर है. मैं यहाँ पर रुकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस ये आगे भी चलेगा. अभी यहाँ तक कोई डाउट हो, कहीं कोई चीज मिस हो गई तो मुझे बताइए. एक बार फिर से कर लेंगे. लेट मी कंप्लीट दिस, देन वी विल डू इट वंस अगेन अगर कुछ मिस होता है तो. अभी क्या करना है, जो ये फर्स्ट कॉलम है यहाँ आइएगा, राइट क्लिक, और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का. आप ग्रुप पे क्लिक कर दीजिएगा. ग्रुप पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आ रहा है स्टार्टिंग एट एंड एंडिंग एट. स्टार्टिंग एट को कर दीजिएगा 0. देखिए ये मैं 0 कर रहा हूँ यहाँ पर. उसके बाद ये जो एंडिंग एट है ये अपने आप उठा लेगा इस चीज को. एंडिंग एट में जो लास्ट अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा. अब ये आ रहा है बाय. बाय मीन्स बैंड. तो मैं रेंज बनाना है, स्ट्रेटिफिकेशन बनाना है. तो स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पर 1 लाख है बाय डिफॉल्ट, तो मैंने इसको कर दिया ओके. देखिए ग्रुप बन गया. ग्रुप से क्या लग रहा है पता, कि ₹0 से लेकर 1 लाख रुपीज तक के जो इन्वॉइसेज हैं उसका एक बैंड बन गया. ₹1,01,000 से लेकर 2 लाख तक के जो इन्वॉइसेज हैं उसका एक बैंड बन गया, एंड सो ऑन. ये सारे ग्रुप्स बन गए आपके. उसके बाद आप देखिए, एक बार इस टेबल को देखिए, और इस टेबल से व्हाट इज द कंक्लूजन यू कैन अराइव एट फॉर सैंपल सिलेक्शन. टोटल इन्वॉइसेज मेरे पास 93 हैं. टोटल इन्वॉइसेज मेरे पास 93 हैं. अब मेरे को ये सोचना है कि 93 में से मुझे कौन कौन से इन्वॉइस चेक करने हैं, सैंपल कितने का बनाना है. अगर आप देखोगे, आउट ऑफ 93 इन्वॉइसेज, 48 इन्वॉइसेज आर लो वैल्यू इन्वॉइसेज, जो 0 से 1 लाख के बीच के हैं, एंड 17 इन्वॉइसेज आर दोज इन्वॉइसेज विच आर फॉलिंग इन द रेंज ऑफ 1 लाख टू 2 लाख. तो ये आप जो 1 लाख का बैंड यहाँ पर आ रहा है 4 और 5 में, इसमें से कुछ चेक करना नहीं करना आप,
आपको डिसाइड करना है, यू कैन इग्नोर देम ऑन मटेरियलिटी ग्राउंड्स। बाकी कौन से हैं? ये वाले जो इनवॉइसेज हैं, टोटल हो जाएंगे 28 इनवॉइसेज। ये वाले जो इनवॉइसेज हैं, इसमें से कौन सा आपको इनवॉइस चेक करना है, नहीं करना है, आपको डिसाइड करना है। सो व्हाट इज हैपनिंग, इफ यू सी दिस एट अ मैक्रो लेवल, आउट ऑफ 93 इनवॉइसेज, टोटल 93 इनवॉइसेज में से, टोटल 93 इनवॉइसेज में से 51% ऑफ द वैल्यू, सॉरी, टोटल 93 इनवॉइसेज में से 51% ऑफ द इनवॉइसेज आर कैप्चरिंग 1,80,000 ऑफ द अमाउंट, सॉरी 80 लाख ऑफ द अमाउंट। बाकी अमाउंट जो कहीं और शामिल है। तो मान लीजिए मैंने जो सैंपल बनाया वो यहाँ से बनाया, तो मैंने 48 और 17 लो वैल्यू इनवॉइसेस थे शुरू के, तो ये 48 और 17 टोटल जो इनवॉइसेस थे, यानी कि टोटल आपका 65 इनवॉइसेस आउट ऑफ 93 इनवॉइसेस, 65 इनवॉइसेस दैट इज टॉप टू आर लो वैल्यू इनवॉइसेस। तो मैंने सोचा कि कंट्रोल्स अच्छे हैं, इनको इग्नोर कर दिया, इनको मैंने सैंपल में पकड़ा ही नहीं। बाकी जो इनवॉइसेस हैं लेफ्ट आउट 28 इनवॉइसेस, इनकी मैंने वॉचिंग कर ली। अब वॉचिंग कैसे करनी है, आप किसी पर भी क्लिक कर दीजिए, डबल डबल क्लिक। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो जो इनवॉइसेस हैं वो सामने आ जाएंगे आपके पास। तो लेजर में से उसने, लेजर में से एक्सेल ने इनवॉइस उठाया और यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। एंड देन यू कैन ऑब्वियसली आस्क द पीपल इन अकाउंटिंग टीम कि मुझे ये वाला इनवॉइस चेक करा दीजिए, दे विल सबमिट द इनवॉइसेस एंड यू कैन गो फॉर सैंपल चेकिंग। और जब आप ये कर लें तो इसका एक प्रिंट आउट अपनी फाइल में लगा लीजिएगा एज द वर्किंग पेपर फॉर सैंपल सिलेक्शन। तो मैं यहाँ पर एक बार रुकता हूँ, आप मुझे बताइए इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। My recommendation is, and I must say it's my very strong and firm recommendation, जब सैंपल सिलेक्शन करें प्लीज मेक यूज ऑफ एक्सेल टूल and the Pareto analysis formula. We must have read in the school days also or graduation days also 80-20 rule. So this is the application of 80-20 rule. I believe this thing should be very helpful in sample choice. तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपका तो पूछिए, एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर टैक्स ऑडिट आल्सो, फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट आल्सो। करना कुछ नहीं है आपको, टैली से या जो भी अकाउंटिंग पैकेज आप यूज करते हो उससे आपने लेक्चर एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद आपने उसके ऊपर परेटो एनालिसिस टूल को रन करना है। थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू दैट वे। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, चंद्रमोहन सर, समीर जी, सुरेंद्र जी, कोई क्वेश्चन यहाँ पर तो पूछिए। भूपेंद्र जी। इन माय एक्सपीरियंस इवन एज अ पीयर रिव्यूअर व्हाट आई फाउंड, जब कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स के अंदर हम लोग जाते थे पीयर रिव्यू करने के लिए और पूछते थे कि आपने सैंपल कैसे बनाया, तो काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जवाब दिया कि सैंपल इज बेस्ड अपॉन माय प्रोफेशनल जजमेंट। देन वी आस्क देम व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट प्रोफेशनल जजमेंट, उनका कोई जवाब नहीं होता था। तो इससे ऐसा लगता है कि सैंपल सिलेक्शन जब करते हैं लोग तो दे गो ऑन आर्बिट्रेरी बेसिस, जो ठीक लगा, जो दिल को लगा वो सिलेक्शन कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इट मस्ट हैव सम साइंटिफिक रीजन, एंड साइंटिफिक रीजन इज अ वेरी वेल एक्सेप्टेड फॉर्मूला ओवर हियर, परेटो एनालिसिस। काफी सारी सीए फर्म्स परेटो एनालिसिस को यूज करती हैं, एंड आई बिलीव दिस कुड बी वन ऑफ द गुड सिनेरियो फॉर मेकिंग अ सैंपल चॉइस। गुड एंड सेफ, आई मस्ट से, गुड गुड तो है ही, सेफ भी है। आप इसका प्रिंट आउट अगर अपनी फाइल में लगाएंगे, कोई भी रेगुलेटर कुछ पूछता है आपसे तो आपको दो चीजें साबित करनी है, इंटरनल कंट्रोल अच्छा था कि नहीं था, और इंटरनल कंट्रोल के बेस पर आपने सैंपल सिलेक्शन कैसे किया। तो कैसे किया इस परेटो एनालिसिस, और कंट्रोल्स तो आप ऐसे भी चेक करते ही हो। चंद्रमोहन जी, यस आई एग्री विद यू, यू कैन गो फॉर लाइक इन नंबर 5, यू कैन, कोई रोकने वाला नहीं है। अल्टीमेट चंद्रमोहन जी क्या होगा, जो अभी हमने परेटो एनालिसिस की वर्किंग की है, इससे फायदा क्या मिल रहा है, द एडवांटेज इज एटलीस्ट द सैंपल सिलेक्शन इज इन माय कंट्रोल। Now, out of that sample selection, what I pursue and what I don't pursue will also be in my control. For example, the top two rows I left, may be a possibility कि जो जो शुरू की टॉप टू रोज हैं उनके इनवॉइसेस को मैं अलग कर लूं और उस पर फिर से परेटो एनालिसिस चला दूं, दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। so I can have sub sample of the left out sample, that is also a possibility ना। so depending upon controls we can move ahead and so on। तो मुझे लगता है, थैंक यू भूपेंद्र जी फॉर द कॉम्प्लीमेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आपने, थैंक यू भूपेंद्र जी। आई शुड गिव द क्रेडिट टू विजय जी जिन्होंने मौका दिया है डिस्कस करने का। बट अभी कोई किसी को डाउट होता पूछ लो, अगर आप कहोगे तो मैं एक बार इसको फिर से रन करके दिखा देता हूँ। विजय जी क्या बताइए, कुछ आप गाइड कीजिए, मैं फिर से इसको रन करूँ या आगे चलें। जो मेंबर्स का जो हो चॉइस, भले बोलते हैं तो एक बार कर लीजिए।
समीर जी का आया है, काइंडली रिपीट। चलिए मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ। दोबारा दिखाने उसको के लिए मुझे एक्सेल शीट बंद करना पड़ेगा। एक दो क्वेरी मेरे पास डायरेक्ट आया है, कैन ऐसे 260 लेटर बी डन बाय हैंड डिलीवरी। हाँ, हैंड डिलीवरी भी कर सकते हो आप, ईमेल भी कर सकते हो, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। अल्टीमेटली यू मस्ट हैव द प्रूफ दैट द लेटर वाज प्रिपेयर्ड एंड वाज गिवन टू द क्लाइंट। अच्छी चीज ये है कि जो ये लेटर है इसका फॉर्मेट कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, तो यू हैव अ वेरी फेयर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन ड्राफ्टिंग द लेटर। तो देखिए एक बार फिर से समझते हैं कैसे करना है। दिस इज द ओरिजिनल वर्कशीट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। आपने एडवर्टाइजमेंट का लेजर अकाउंट लिया एंड पूरा का पूरा लेजर, सारा का सारा लेजर आपने सिलेक्ट कर लिया। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट में। आप चाहें तो इसको अपने नोट पे नोट करते चलिएगा। इंसर्ट में जाएंगे, पाइवेट टेबल पर जाएंगे। पाइवेट टेबल पर फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज पे क्लिक कर देंगे, एक अपने आप नया शीट पे इसके ऊपर बन जाएगा। ओके कर देंगे इसको। नाउ जस्ट सी वन न्यू शीट विल कम अप। There is a question from Chandramohan ji. In one seminar, we have heard that question cannot be asked beyond sample. Is it correct? See, this is a very, I should, with due regards to wherever you have listened, this statement itself is wrong statement. Questions can always be asked beyond sample because they will ask you what is the basis of the sample selection. So when somebody will ask you what is the basis of the sample selection, then somebody can also ask you what is the basis of not selecting that left out area. तो ऑब्वियसली द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, एज मैंने कहा ना शुरू में कि सैंपल सिलेक्शन करना मैंडेटरी नहीं है। आप एक पर्सनल कॉल लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफेशनल विजडम, तो प्रोफेशनल विजडम कैन बी आस्क्ड एंड चैलेंज्ड एवरी टाइम। There is a question by Sirish ji. Please guide how to come to the conclusion that internal controls are okay or has some issue. For that very purpose, you have to see whether control policies are there in the company or not. अब जैसे मान लीजिए, let me complete this sample selection, then I will come to question of Sirish ji. समीर प्रधान जी, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है आपका। इफ सैंपल फेल्स देन वी कैन गो फॉर मोर सैंपल्स। आंसर इज डेफिनेटली यस। अगर आप सैंपल सिलेक्शन से खुश नहीं हैं, आपको डाउट लगता है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू एनलार्ज योर सैंपल साइज। तो एक बार हम ये एक्सेल को कंप्लीट करते हैं, फिर सीरीज का क्वेश्चन दोबारा लेता हूँ। तो ये शीट आ जाएगा यहाँ पर। शीट आने के बाद क्या करना है आपने, देखिए यहाँ पर जो ये विंडो खुला हुआ है ना राइट साइड में, इसमें ग्रॉस टोटल पर ढूंढिएगा। तो आई विल चेक द ग्रॉस टोटल ओवर हियर। जैसे ये आपका फील्ड आ गया ग्रॉस टोटल का। इस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए और ड्रैग कीजिए। तो ड्रैग नंबर 1 रोज, ये रोज में एक बार ड्रैग हो गया। अब मुझे 4 बार और ड्रैग करना है। आई विल ड्रैग ग्रोस टोटल 4 टाइम्स इन वैल्यूज। जस्ट सी 1 2 3 एंड वन मोर, दैट इज 4। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये 5 कॉलम्स आ गए। इस विंडो को हम बंद कर सकते हैं राइट साइड में। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, गो टू दिस कॉलम नंबर सी, दैट इज थर्ड कॉलम। इसमें राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद गो टू शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। तो आप देखिए परसेंटेज आ जाएगा इसका। फिर कॉलम नंबर 4 में आइए, कॉलम नंबर डी में आइए, अगेन राइट क्लिक कीजिए, देन समराइज वैल्यूज एज काउंट। तो काउंट से क्या आ जाएगा कि 5782, 5782 के टोटल 4 इनवॉइस हैं। देन यू विल कम टू दिस लास्ट कॉलम। यहाँ पर पहले वो काउंट निकालना है, समराइज वैल्यूज बाय काउंट। और काउंट के बाद क्या करना है आपने, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। अब देखिए ये 100 आ जाएगा लास्ट में। परसेंटेज इज मैचिंग तो टोटल व्हाट वर यू सेइंग, टोटल वी हैव 93 इनवॉइसेस। आउट ऑफ 93 इनवॉइसेस वी हैव टू मेक द ग्रुपिंग नाउ। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, अब आप फर्स्ट कॉलम में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। ग्रुप के ऑप्शन में फर्स्ट में आप 0 लिख दीजिए, स्टार्टिंग एट 0, एंडिंग एट, ये अमाउंट खुद ही आ जाएगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना। अब ये बैंड बनाना है, तो बैंड बाय डिफॉल्ट जो बनता है ना वो 1 लाख के ग्रुप का बनता है। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मान लीजिए बढ़ा देता हूँ इसको, तो इसको मान लीजिए 1 लाख के बजाय मैं 2 लाख कर देता हूँ। तो अब देखिए ग्रुप्स क्या बन जाएंगे, सी दीज आर योर ग्रुप्स। तो अभी इससे क्या इंटरप्रिटेशन आ रही है कि आउट ऑफ 93 इनवॉइसेस, टोटल जो इनवॉइस मिले मुझे एडवर्टाइजमेंट के वो 93 मिले। 93 इनवॉइसेस में से 2 लाख रुपए तक के खर्चे के इनवॉइसेस जो है टोटल कितने हैं, 65 है। तो
अब अगर आप कहते हो कि ये वाला खर्चा लो वैल्यू खर्चा है, जिसके अंदर कोई गलती होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो. दैट मीन्स इफ यू से इंटरनल कंट्रोल्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन ऑलवेज इग्नोर 65, बिकॉज आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि 2 लाख तक के इनवॉइसेज जो है लो वैल्यू है. तो व्हाट यू विल डू, जो बाकी हाई वैल्यू इनवॉइसेज हैं वो बचेंगे आपके 28. आप इनको चेक कर लीजिएगा. व्हेन यू विल चेक देम, तो आपको क्या फायदा मिला कि आपने अपना लगभग 70% इनवॉइस चेक ही नहीं किया. तो दिस कुड बी अ फेयरली गुड सैंपल. नाउ व्हेन आई से फेयरली गुड सैंपल, तो आपने क्या किया, 93 में से 30% आइटम्स ही चेक किए. क्यों? क्योंकि आपने कंक्लूजन निकाला था कि इंटरनल कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग. अब हम क्वेश्चन लेते हैं शिरीष जी का. ये कैसे लगेगा पता इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? मान लीजिए शिरीष जी मेरे क्लाइंट है और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मैं चेक कर रहा हूँ. तो मैं पूछूंगा शिरीष जी से कि क्या जब आप एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई एजेंसी हायर करते हो तो टेंडर निकालते हैं? क्या उनसे फेस टू फेस मीटिंग होता है? क्या उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हो? क्या वो पार्टी रिलेटेड है कि अनरिलेटेड है? अब जब ये क्वेश्चंस मैंने पूछे, तो ये बन जाएगा ऑडिट क्वेश्चन एयर. अब उसमें से मान लीजिए शिरीष जी ने कहा कि जिन लोगों को हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो टोटल 10 पार्टीज हैं, और 10 पार्टीज में से एक पार्टी तो हमने इसी साल एंगेज किया, और एक पार्टी जो है वो डायरेक्टर का रिलेटिव है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो पार्टी आपने इस साल ही एंगेज किया, नया पार्टी, वो मान लीजिए कि लो वैल्यू इनवॉइस में आ रहा है, तो आइडियली तो उसको छोड़ देना चाहिए. लेकिन क्योंकि वो नया पार्टी है, तो उस केस में दी पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क इज हाई, बिकॉज पुराना कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है उसका. तो मैं 65 की लो वैल्यू में आने के बावजूद उसको चेक कर लूंगा. दूसरा पार्टी कौन है? जो कि डायरेक्टर का रिलेटेड पार्टी है. हो सकता है कि वो वाला भी लो वैल्यू इनवॉइस हो, लेकिन क्योंकि पार्टी रिलेटेड है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी हो सकता है कि शायद डायरेक्टर ने अपने पार्टी को काम दिलाने के लिए ये सारा कॉन्ट्रैक्ट किया हो. तो डिस्पाइट इट बीइंग अ लो वैल्यू एंड कंट्रोल्स बीइंग गुड, आई विल स्टिल सिलेक्ट इट एज सैंपल साइज. एम आई क्लियर? तो वो केस टू केस बेसिस के ऊपर आपको एनालाइज करना पड़ेगा. बट होगा क्या फायदा इस चीज से कि आपने जो सब सैंपलिंग करनी है, 65 में जो सब सैंपलिंग करनी है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या कोई नया पार्टी था कि नहीं था, क्या कोई पार्टी रिलेटेड था कि नहीं था. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल बी कन्विंस्ड विद बैलेंस सिलेक्शन. 33% जो सिलेक्शन यहाँ पर आ रहा है, दैट विल बी सफिशिएंट इनफ. अब मान लीजिए रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटर से कह देंगे कि भाई जो 65 आपने चेक नहीं किया, उसके अंदर तो पार्टी रिलेटेड था, आपने क्यों चेक नहीं किया? तो उसका जवाब अगर आपके पास नहीं होगा ना, तो वो एक प्रॉब्लम है. तो आप इसको एक इंडिकेशन लेके चलिए कि जो 65 में छोड़ रहा हूँ, उसके बारे में मैं सवाल पूछूंगा मैनेजमेंट से कि मुझे ये बताइए कि कोई पार्टी रिलेटेड था कि नहीं था. कोई पार्टी फॉरेन का पार्टी तो नहीं था? मान लीजिए कोई विदेश में पार्टी बैठी थी, उसको आपने ऐड की एजेंसी दे दी, तो दैट वी नीड टू चेक. तो आई बिलीव द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ कि इंटरनल कंट्रोल्स कैसे चेक कर रहे हैं. अच्छा, ये केवल एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट के लिए. डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स के लिए आप डिफरेंट तरीके से सैंपल सिलेक्शन कर सकते हैं. Sirishi, I think the concept is clear, and other audience, I believe the way how to draw upon this whole Pareto worksheet is also clear. अब मुझे मान लीजिए ये 18 इनवॉइस चेक करने हैं ना, मैं इस वाले सेल पॉइंटर पे रखूंगा और डबल क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर, तो मेरे पास ये 18 इनवॉइसेस अपने आप आ जाएंगे. इसमें कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ लीजिए. आई बिलीव बिकॉज देर इज नो क्वेश्चन, डाउट्स आर क्लियर. आई एम क्लोजिंग दिस वर्कशीट. So what you need to understand once again, let me repeat, sample checking nowhere is mandatory. It is totally your choice whether you want to go for sample checking or not. But my humble suggestion is when you go for sample checking, simply stop saying कि मुझे लगा, मेरे दिल को लगा तो मैंने इतना ही चेक किया. Please have some scientific or a mathematical basis of sample choice. Example के लिए Pareto analysis could be a very good tool for making a sample choice. अगर परेटो एनालिसिस आपने आज समझ लिया है, मान लीजिए अगली बार जब हम मिलें, थोड़ा सा अगर आप दिमाग से स्किप कर जाते हैं तो मुझे नेक्स्ट टाइम बता दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा. बट प्लीज यूज परेटो एनालिसिस, और आपके वर्किंग पेपर्स के अंदर परेटो एनालिसिस का वर्किंग और इंटरनल कंट्रोल का असेसमेंट, दोनों पेपर्स लगे होने चाहिए. थैंक यू भूपेंद्र जी. चलिए, आई बिलीव दिस सैम्पलिंग थिंग इज ऑल्सो क्लियर. नाउ लेट मी कम टू द अदर लेग ऑफ डिस्कशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर. इन
most of the cases, it had been an experience of mine that management gives you something in writing and the auditor relies upon it without further investigation. For example, I should not say investigation, without further vouching. तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैनेजमेंट ने आपको लिखकर दे दिया कि मेरे गोडाउन में इतना इन्वेंट्री रखा है और ऑडिटर ने कोई फर्दर चेकिंग नहीं किया, इट इज रॉन्ग। या मैनेजमेंट ने आपसे कहा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैंने चेक कर लिया है, एवरीथिंग इज गुड इनफ, तो हमने इससे राइटिंग ले लिया और फर्दर कुछ चेकिंग नहीं किया, इट इज रॉन्ग। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वट एवर मैनेजमेंट इज गिविंग यू इन राइटिंग is called as management representation, and when this thing is given in writing, it is called as management representation letter or written representation. For this purpose we have SA 580. Now what does SA 580 says? SA 580 define करता है management representation को, देखिए कैसे। SA 580 कहता है management is primarily responsible for preparation and presentation of financial statements, establishing accounting system and internal control system, prevention and detection and correction of frauds and errors, and lastly compliance of applicable laws and regulations as well as applicable financial reporting framework. तो ये तो हम सब जानते हैं कि मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है इन चार चीजों के लिए, लेकिन एसए 580 कहता है कि इन सभी चीजों का आपको मैनेजमेंट से इन राइटिंग एक्नॉलेजमेंट भी लेना है, और जब मैनेजमेंट इन चीजों को एक्नॉलेज करे इन राइटिंग, टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और एमआरएल इन शॉर्ट, दैट इज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। And that's why I am writing here, when management acknowledges its such responsibilities in writing, then such written acknowledgement is known as management representation letter. This is not as simple as it's perceivable. The question arises, can we rely upon whatever management is saying always? Answer is no, a big no. What SA 580 says, you will refer para 3 of SA 580, it says that although written representations provide necessary audit evidence, यानी कि जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट देता है वो अपने आप में एक एविडेंस तो हो सकता है, बट इट इज नॉट द एंटायर सेट ऑफ एविडेंस। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन about any of the matters with which they deal. Furthermore, the fact that the management has provided reliable written representations does not affect the nature or extent of other audit evidence that the auditor obtains about the fulfillment of management's responsibilities or about specific assertions. आसान भाषा में अगर बात की जाए तो पैरा 3 क्या कहता है? पैरा 3 कहता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर is one kind of audit evidence. I repeat, is one kind of audit evidence, but is not a substitute. For the auditor's duties. For the auditor's duties to obtain sufficient and appropriate audit evidence from other sources, other reliable sources. And it is quite obvious, management is not that much reliable as external sources will be. And that's why मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर केवल एक तरह का ऑडिट एविडेंस है, एक प्रकार का ऑडिट एविडेंस है, अपने आप में 100% एविडेंस नहीं है। नाउ व्हाट SA 580 फर्दर सेज, बीइंग एन ऑडिटर, आप मैनेजमेंट से कहते हैं कि प्लीज गिव अस एमआरएल, मैनेजमेंट में ईदर वुड बी अनविलिंग टू प्रोवाइड यू एमआरएल और मैनेजमेंट में रिफ्यूज टू प्रोवाइड एमआरएल, देन व्हाट टू डू? फॉर दिस पर्पस SA 580 सेज, इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज्ड टू प्रोवाइड एमआरएल, मैनेजमेंट ने कहा कि हम आपको एमआरएल नहीं देने वाले हैं, तब क्या करें? तो ऐसे 580 कहता है, then it shall be considered in the first box. Just a moment. So if the management is refusing you to have the MRL, then it shall be considered as limitation on scope of auditor's duties. So what is the meaning of limitation on scope as a layman? If some kind of obstacle is being created, in discharge of your audit duties, either by external circumstances or internal circumstances or management circumstances, it is called as limitation on scope. तो सिंपल सी बात अगर हिंदी में बोलूं मैं, आपके ऑडिट ड्यूटी को करने में कोई अड़चन डालता है ना, तो वो लिमिटेशन ऑन स्कोप है। वो अड़चन मैनेजमेंट डाल सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी डाल सकते हैं, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल, जब कोविड का टाइम चल रहा था तो इट वाज द एक्सट्रेनियस सर्कमस्टेंस व्हिच लीड टू द लिमिटेशन ऑन स्कोप। तो मैनेजमेंट के बारे में कहा गया कि इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू प्रोवाइड यू एमआरएल, it is limitation on scope, and what you have to do then, he means the auditor may communicate this to TCWG, which we already covered. एक लीगल असिस्टेंस रिक्वायर्ड, आप किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा तो मुझे क्या करना चाहिए, और इशू एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट। तो कौन सा रिपोर्ट आएगा हमने कल डिस्कस कर लिया था, SA 700 सीरीज। तो अगर मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है आपको, उस केस में आपको एक कॉल लेना होगा कि क्या आप डिस्क्लेमर रिपोर्ट देंगे, एडवर्स रिपोर्ट देंगे, क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे। ये डिपेंड करेगा, जो हमने कल डिस्कशन किया था कि परवेसिव इंपैक्ट आ रहा है कि नॉन परवेसिव इंपैक्ट आ रहा है। एंड
if these three things need, if you are not willing to go ahead with these three things, then you may even resign from the engagement, आप विड्रॉ भी कर सकते हो। दूसरी चीज क्या बोला SF580 कि मैनेजमेंट अनविलिंग है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनविलिंग? डिफरेंस इज देयर बिटवीन अनविलिंगनेस एंड रिफ्यूजल। मैनेजमेंट कहता है कि मुझे नहीं पता कि एमआरएल क्या होता है, आई एम नॉट टेक्निकली साउंड एज टू व्हाट एमआरएल इज, मुझे बनाना नहीं आता एमआरएल। तो आईसीआई ने कहा ऐसे 580 में, इफ मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू प्रोवाइड एमआरएल देन ऑडिटर शुड प्रिपेयर एमआरएल ऑन हिज ओन। आप अपने आप एमआरएल बना लीजिए एंड देन इट गेट इट साइंड बाय द मैनेजमेंट। बट द कंडीशन इज, which is a very logical condition, the date of signatures on MRL can never be a date after the date of audit report. So it can be any date till the date of audit report. ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद की डेट एमआरएल पे नहीं हो सकती है, ये डेट पहले की डेट हो या सेम डेट हो। इट कुड नॉट बी अ डेट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, रियल वर्ल्ड में ना आपको ये मिलेगा कि जनरली एमआरएल ऑडिटर लोग बनाते हैं लेकिन उस पर साइन करना भूल जाते हैं, या एमआरएल जो होता है वो ईमेल पर आता है स्कैन कॉपी होकर, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद आता है। ऑल दीज थिंग्स आर बैड थिंग्स, आर रॉन्ग थिंग्स। तो यू नीड टू वेरी केयरफुल कि एमआरएल जो है वो आपके पास पहले से ही हो। ऑडिट रिपोर्ट जब साइन कर रहे हैं उससे पहले आपके पास कंप्लीट एमआरएल आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट के पास जाते हैं एमआरएल खुद बनाकर, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू प्रिपेयर्ड एमआरएल एंड यू अप्रोच द मैनेजमेंट कि दैट आई हैव ड्राफ्टेड द एमआरएल, प्लीज साइन इट। इफ दे रिफ्यूज टू साइन then you will again go back to first box. आप पहले वाले बॉक्स में आ जाएंगे कि yes it is a limitation on scope and then you have to take a call कि what kind of report should be issued. So you know there is a kind of mixed bag. Some companies sign, some companies even don't see what they are signing. So what you have to understand, yes, MRL should be signed, dated, and date should be prior to the date of audit report. Now there is a question by Devinder Joshi ji, MRL to be signed by minimum 2 directors. I believe only one director will be sufficient to sign and that director must be authorized. वो जो डायरेक्टर वो ऑथराइज्ड हो कि एमआरएल कौन साइन कर रहा है। तो ओनली द ऑथराइज्ड पर्सनल बीइंग अ डायरेक्टर और बीइंग मे बी अदर पर्सन कैन आल्सो साइन। बस आपको ये देखना है कि एमआरएल साइन करने वाला जो व्यक्ति है वो बोर्ड ने उसको ऑथराइज किया हो। अगर एक व्यक्ति भी है तो भी चलेगा। क्लियर देवेंद्र जी? नॉर्मली ऐसा होता है ना जब आप ऑडिट करते हैं कॉर्पोरेट्स का, तो वो किसी को डेजिग्नेट कर देते हैं कि दैट दिस एम्प्लॉय विल बी द नोडल पर्सन टू बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। वो जो नोडल पर्सन है वो साइन कर सकता है। Some more questions are there. Let me see. Yeah, सुरेंद्र सिंह जी, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। मोस्टली इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज दे आर हेजिटेंट, बट यस वी हैव अ मिक्स्ड बैग, सम आर हेजिटेंट सम आर नॉट। भूपेंद्र जी ने कुछ लिखा है, व्हेन मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू गिव एमआरएल इफ दे रिफ्यूज टू साइन देन व्हाट। तो भूपेंद्र जी आपके क्वेश्चन में ये आंसर है, इफ दे रिफ्यूज टू साइन देन वी विल गो टू द फर्स्ट बॉक्स, इट विल लीड टू लिमिटेशन ऑन स्कोप। And then this question is addressed. There is a question by Devendra ji, which I already took up. MRL to be signed by minimum 2 directors. Any nodal person can sign provided he is authorized. तो 2 directors का होना जरूरी नहीं। Next. जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया, अब इस डिस्कशन के बाद let us have some case studies and let me see how far you would be able to answer these case studies out of your understanding and experience. तो आज की जो केस स्टडीज हैं जरा उनको समझते हैं और करते हैं। So this is case study number 1. This question is like that. Mr. X is the auditor of ABC Private Limited for the financial year 21-22. He is of the opinion that there is no need to wait and gather external confirmations because it involves much time and cost. In the notes to accounts, however, the management disclosed that certain debtors and creditors balances are subject to confirmation. So इस case study में what will be your answer? आपका क्या कहना है? Yes, any answer? So just see in this question, in this case study, there are 2 questions rather. First question is, ऑडिटर का कहना है कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस के रिप्लाई की वेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज व्हाई शुड आई सेंड कन्फर्मेशन, इट विल बी वेस्टिंग टाइम, इट विल इंक्लूड कॉस्ट। तो ऑडिटर इज सेइंग कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेजते ही नहीं है क्योंकि खर्चा भी होगा और टाइम भी लगेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, वेदर ही इज राइट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 इज, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा है मैनेजमेंट ने दैट सर्टेन डेटर्स एंड क्रेडिटर बैलेंसेस आर सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन। ये वाला तो हमने क्वेश्चन कल डील ही किया था। If this kind of statement is there that certain debtors and creditor balances are subject to confirmation, it may lead to qualified report. हमको क्लीन रिपोर्ट नहीं देना यहाँ पर, it may lead to qualified report. कैसे रिपोर्ट क्वालिफाइड बनेगा या नहीं बनेगा वो हमने कल डिस्कस किया था। और दूसरी चीज आती है कि
ऑडिटर कहता है that there is no need to wait and gather external confirmations because it involves much time and cost. आप एक सेंटेंस सुनिएगा और अगर हो सके तो नोट कर लीजिएगा. We have essay number 200, essay number 200, which deals with objective of independent audit. essay number 200 ने साफ साफ लिखा है time and cost or general convenience cannot be the excuses for not gathering sufficient and appropriate audit evidence. I repeat, essay 200 कहता है time and cost or your general convenience cannot be the excuse for not gathering sufficient and appropriate audit evidence. इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑडिटर ने बात लिखी या सोची कि there is no need to wait and gather confirmation request, it is grossly wrong. It is an act of gross negligence also. जो कि आपका समय बर्बाद हो रहा है या खर्चा हो रहा है, अपने आप में एक्सक्यूज नहीं हो सकता एविडेंस ना हासिल करने के लिए. So in this very case study, there are two answers. Number one, time and cost cannot be excuses vis-a-vis the audit evidence. And number second, if statement is written in the notes to accounts that debtors and creditor balance is as per to confirmation, then it may lead to qualified or adverse report as the case may be, for which we had a very good discussion yesterday. Let me see in the chat box, something is there. Okay. Now, case study number 2. This case study number 2 is very, I should say, important case study for most of the auditors. Just see what this case study says. The auditee client has provided rupees 2 lakhs as provision for bad and doubtful debts in the books of account, while the auditor is challenging this provision and opines that it should be rupees 5 lakhs. अब ये sentence देखिए क्या लिखा है. While the auditor is challenging this provision and opines that it should be rupees 5 lakhs. तो ऑडिटर कहता है कि मेरे अकॉर्डिंगली जो बैड डेट प्रोविजन है वो 5 लाख का होना चाहिए. क्लाइंट कहता है कि मेरे अकॉर्डिंगली जो बैड डेट प्रोविजन है 2 लाख का होना चाहिए. Now what happened? After much deliberations and considerations, both auditor and auditee concluded at a provision of rupees 4 lakhs. तो दोनों के अंदर बात होता रहा, and then they arrived at a conclusion कि provision जो है ना तो 2 लाख होगा ना 5 लाख होगा, it should be 4 lakhs. Now what happened? The auditor did not document these deliberations and considerations, as he is of the view that once he is satisfied, there is no need to keep any such record in his file. Auditor कहता है कि अगर मैं convince हो गया हूं तो कोई documentation करने की जरूरत ही नहीं है. How far he is correct? Auditor is incorrect over here. So what we need to understand, we do have essay number 230. आप इसका number note कर लीजिए. Essay number 230. Even logically answer will be same. Auditor is incorrect. But let me go to standard wise legal position also. Essay 230 बात करता है audit documentation की. And essay 230 says audit documentation is a record. Audit documentation is a record electronically or manually which comprises of. तो audit documentation क्या है? Audit documentation record है जो कि इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है. और इसमें क्या होता है? Which comprises of number 1, audit procedure supplied. Number 2, audit evidence obtained. And number 3, audit conclusions achieved. तो ऐसे 230, ऐसे 230 भी कहता है कि जो आपका ऑडिट फाइल बनता है उसमें 3 चीजें होनी चाहिए. एक कि आपने ऑडिट प्रोसीजर क्या अप्लाई किया, जैसे मैंने सैम्पलिंग कैसे की, आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए. दूसरा, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, आपको क्या क्या एविडेंस मिला, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कंफर्मेशन. एंड नंबर थर्ड कि आपने जो भी डिसीजन लिया, जो भी कंक्लूजन ऑडिट का लिया, वो क्या लिया. So in this case study number 2, what is happening? The auditor is not documenting it. If he will not document, that means he is missing out the reasons and the justifications on the basis of which the conclusion of rupees 4 lakhs has been arrived. And that's why it's a contravention and auditor is wrong. There's a question by Ramesh ji, whether email can be used for external confirmations. Ramesh ji, answer is yes. But यहाँ पर एक चीज है, email confirmation के reply के लिए use तो कर सकते हैं, but as an auditor you have to verify and justify that the source of email is reliable. ईमेल कौन भेज रहा है वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा. ऐसा ना हो कि किसी ने स्पूफिंग कर दिया हो, किसी ने मेल भेज दिया हो, लेकिन वो मेल आप रिलाई कर लेते हो तो कल के आप पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. So the source of mail should be verified. The sender should be verified. Am I clear, Ramesh ji? Okay. Let me proceed further. Case study number 3. This I already covered yesterday, but still we should do again today also. ABC and Company is a partnership firm. The depreciation was provided in the books of account in accordance with the rates prescribed under the Income Tax Act
What audit consideration should be observed by the auditors in this regard? ये तो हमने कल भी कवर किया था. अगर आप पार्टनरशिप फर्म का टैक्स ऑडिट करते हैं, so what we need to understand, the depreciation needs to be provided as per accounting standards on the basis of useful life. लेकिन कैसे किया यहाँ पर? The depreciation is based upon income tax side, which is wrong. So ultimately, what you have to do, you have to qualify the report in Form 3CB. We have to add a paragraph that the partnership firm has failed in providing depreciation as per useful life, the financial impact of which is ascertainable or non-ascertainable as the case may be. तो इसमें कल हमने जो बात की थी वही वाली केस स्टडी आज फिर से आपके पास है. Case study number 4, something very pertinent case study and very, I must say, prominent also. Real world में काफी होता है. The statutory auditor of PKO Limited did not verify the physical existence of its fixed assets. They have taken a written management representation about the fact that the fixed assets have been verified by their own staff and are existing as shown in the fixed assets records. The statutory auditors relied upon the same, but later on it was traced that some fixed assets were in fact not existing on the balance sheet date. The auditors were charged of gross negligence and they are defending themselves under the cover of the declaration given by the management. तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिक्स्ड असेट्स थे, ऑडिटर ने फिजिकली जाकर वेरीफाई ही नहीं किया, ना ही उसको ऑब्जर्व किया कि वेरिफिकेशन हुआ था कि नहीं हुआ था. मैनेजमेंट ने जो लिख कर दिया इन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन उस पर ही रिलाई कर लिया. बाद में पता चलता है रेगुलेटर्स को कि ऑडिटर्स ने तो वेरिफिकेशन किया ही नहीं था और उन पर चार्ज लगा ग्रॉस नेग्लिजेंस का. एंड देन द ऑडिटर्स आर सेविंग देमसेल्व्स in the guise of saying ki whatever we did, we relied upon the management declaration, that is management representation letter. Is it correct? Answer is no, it is not correct. SA 580 very specifically states and very categorically states auditors are not absolved of their responsibilities simply by relying upon management representation letter. They have to still apply their own independent audit procedures. तो मैनेजमेंट जो भी लिख के देता है आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं. रादर आपको चेक करना है कि जो मैनेजमेंट ने लिख के दिया वो कितना रीजनेबल है, कितना ट्रस्टवर्दी है. If you are not doing that thing, that means you are failing in your duty, and it's a contravention of SA 580. And more importantly, it is a professional misconduct under Chartered Accountants Act also. There is a question by Surendra Sangvi. Sir, can you circulate standard report for private limited? सुरेंद्र संघवी जी, मेरी जो ये रिपोर्ट्स है ना बुक में पब्लिश्ड है, तो वो कॉपीराइटेड है, तो मैं सर्कुलेट तो नहीं कर पाऊंगा. मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, आप इसका एक फॉर्मेट है वो SA700 सीरीज से उठा लीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिएगा उसे. तो वंस यू विल डाउनलोड SA700, इन SA700 इन द एंड देयर आर सर्टेन इलस्ट्रेशंस. आप देखिएगा उसमें से कौन सा इलस्ट्रेशन आप पर एप्लीकेबल होता है एंड देन यू कैन सिंपली यूज दैट स्टैंडर्ड फॉर्मेट. उसमें कोई डाउट आए तो फिर पूछ लीजिएगा आप. Take 30 seconds, 40 seconds for case study 5 and give me the answer. And I request all of you, please do not search in Google. थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको. आप अपना समय लीजिए, 30-40 सेकंड का, 1 मिनट का समय लीजिए और जवाब दीजिएगा. उसके बाद ABC Limited is planning to extend its business operations for which huge fund is required. The company therefore has prepared its projected financial statements for 5 years to be submitted to the bank for loan application. The company hired you to examine the projected financial statements and give report thereon. What things will you consider before accepting the engagement, and what audit evidence will be obtained for reporting on projected financial statements? Take your time. सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना रिपोर्ट दे सकता है? चिराग जी का एक क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज डिस्कस द एग्जांपल ऑन डेप्रिसिएशन ऑन पार्टनरशिप फर्म अगेन? Chirag ji, give me 2-3 minutes. Once I will cover case study 5, then I will go back to the same case study. So give me 2-3 minutes only. So see, there is a big dilemma in the minds of chartered accountants कि क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर हम अपना रिपोर्ट दे सकते हैं. Please understand, we have clause number 3 part 1, clause number 3 part 1, second schedule of the Chartered Accountants Act, which states that a member in practice shall be deemed guilty of professional misconduct if he vouches the accuracy of forecast. आप वाउचिंग नहीं कर सकते हो फोरकास्ट की, यानी कि आप सर्टिफाई नहीं कर सकते फोरकास्ट को, लेकिन रिपोर्ट दे सकते हो. अब आपको लग रहा हो कमल क्या कह रहा है, एक तरफ कहता है कि रिपोर्ट दे सकते हो, एक तरफ कहता है कि आप सर्टिफाई नहीं कर सकते हो. एंड दैट्स अ डिफरेंस between certification and reporting. Certification means true and correct. Reporting can have some shapes like reasonable assurance. Reasonable assurance is true and fair view.
Then we have absolute assurance, that is true and correct, certification. Then आता है हमारा moderate assurance. Now what is moderate assurance? Moderate assurance means कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है. So what you need to understand, when some client is engaging you to give a report on the projected results, you can give the report, but never ever mention that it is true and correct. You have to mention that actual results may be different from forecasted results. For this purpose, we have a standard, and it is called as SAE 3400. The title of the standard is Examination of Prospective Financial Information. SAE stands for Standard on Assurance Engagement 3400. So whenever you are called upon and engaged to give a report, on prospective results or projected results, please go ahead, but never ever certify the same. So let us understand what SAE 3400 is and what kind of language can be used for expression of opinion in this regard. So SAE 3400 says that prospective financial information can be of two types. Number one is forecast, number second is projection. Forecast is based upon best estimate assumptions, and projection is based upon hypothetical assumptions. If I say the layman, when I say forecast, best estimate assumptions. Now, when can you have the best estimate? When you do have some past experience. So when you have some past experience and you are making assumptions about the future, on that very basis, it goes to forecast. When you do not have when you do not have any experience and you're making purely hypothetical assumptions, then it becomes projection. But either way, whether it is forecast or projection, it is qualified as prospective financial information. And if the client asks you to give a report their own, then what to do? SAE 3400 says you can give a report on prospective financial results and you can express a moderate assurance on the same. Now, what is moderate assurance? That actual results may be different from forecasted results. लेकिन जब आप moderate assurance को express करेंगे, तो ये considerations आपको mind में रखनी है. You can see the considerations which are visible on screen. Number one, knowledge obtained during any previous engagements. Client के बारे में आपकी जो जानकारी है उसको mind में रखना है. Number second, management's competence regarding the preparation of prospective financial information की जो projections वो लेकर आ रहे हैं, क्या management competent है? ऐसा तो नहीं है blindly कुछ भी करते जा रहे हैं. Number third, the extent to which prospective financial information is affected by the management judgment. Management कहीं bias तो नहीं है, जानबूझकर arbitrary assumptions तो नहीं ले रहा है. That we need to capture. Number four, the sources of information considered by the management for the purpose, their adequacy, reliability of the underlying data, including data derived from third parties, such as industry statistics, to support the assumption. तो जो assumption ले रहे हैं वो कितना arbitrary है, उसका source of information क्या, ये आपको check करना है. Then stability of entities business, entity का जो business है वो कामयाब रहेगा या going concern पे कोई impact आएगा. And lastly, the engagement team's experience with the business and the industry in which the entity operates and with the reporting on prospective financial information. So not only the competency of management but the competency of team engaged by the management also need to be assessed. Ultimately क्या चीजें सामने आती हैं यहाँ से कि अगर क्लाइंट आपसे कहता है कि आप मेरे प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स को सर्टिफाई करो, तो पहले तो सेंटेंस गलत है, सर्टिफाई नहीं होगा. वो कह सकता है कि मेरे प्रोस्पेक्टिव रिजल्ट्स पे अपनी रिपोर्ट दीजिए. सर्टिफिकेशन व्हाट इज रॉन्ग. And now when you are coming forward to report it out, you have to check whether whatever underlying assumptions are there are arbitrary or reasonable. ये आपको चेक करना है. और इसको चेक कैसे किया आपने, इसको आपने अपनी ऑडिट फाइल के अंदर, या आई शुड नॉट से ऑडिट फाइल, वर्किंग पेपर्स के अंदर इसको लगाना भी है. Now I told you that you have to express moderate assurance. So when you express moderate assurance, what will be the language? तो जब ध्यान से समझिएगा लैंग्वेज क्या होगी. The language could be like this. So मान लीजिए मैं आपका क्लाइंट हूँ, आपने मेरे प्रोस्पेक्टिव रिजल्ट्स को एग्जामिन किया, assumptions को चेक किया, assumptions रीजनेबल हैं कि अनरीजनेबल हैं, उसके बाद रिपोर्ट बनाया, आपने साइन करने हैं. अच्छा, इस रिपोर्ट का यूडिन में जनरेट होगा. आप जब रिपोर्ट बना देंगे ना और साइन कर देंगे, तो साइन करने के बाद आपको इसका यूडिन में जनरेट करना है. इफ यू विल गो टू यूडिन पोर्टल, यू विल फाइंड वन ऑफ द फिल्टर ऑप्शन फॉर दीज रिजल्ट्स आल्सो. अब जरा लैंग्वेज देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होगा रिपोर्टिंग का. We have examined the forecast of the name of the entity for period from this to this in accordance with SAE 3400. The preparation and presentation of forecast including the underlying assumptions set out in note number so and so. तो assumptions आपने note में disclose की हुई हैं, उसका आपको cross reference डालना है यहाँ पर. To the prospective financial information is the responsibility of the management and has been approved by the board of directors of the company. तो आपको board resolution की copy भी लेनी है कि आपने assumptions approve की थी. The sources of information are set out in annexure number so and so to the prospective financial information. Our responsibility is to examine the evidence supporting the forecast. Our responsibility does not include verification of the accuracy of forecast. Therefore, we do not vouch
for the accuracy of the same. अभी खत्म नहीं हुआ रिपोर्टिंग, और भी पैराग्राफ्स हैं. He will also write, based on our examination of evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention which causes us to believe that these assumptions do not provide a reasonable basis for the forecast. Further, in our opinion, the forecast is properly prepared on the basis of assumptions as set out in note number so and so, and on consistent basis with historical financial statements using appropriate accounting principles. ये लास्ट सेंटेंस है पढ़ने वाला हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. इसी सेंटेंस से पता चलता है कि आपने सर्टिफाई नहीं किया, आपने मॉडरेट एश्योरेंस दिया है. एंड व्हाट इज द मॉडरेट मीनिंग? सिग्निफाइंग दैट actual results are likely to be different from the forecast since anticipated events frequently do not occur as expected and variation may be material. So ultimately आपने लास्ट में क्या लिखा है कि actual results may be different from the forecasted results. This theme makes it moderate assurance. तो इसमें आपको जो लर्निंग करनी है, लर्निंग क्या करनी है कि आप फोरकास्ट को या प्रोजेक्ट को वाउच नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पर रिपोर्ट दे सकते हो. अगर मैं थोड़ा सा और लेमैन सेंस में बोलूं, आप ये नहीं कह सकते कि फोरकास्ट इज ट्रू एंड करेक्ट और ट्रू एंड फेयर. आप केवल ये कह सकते हो कि जो अजम्पशंस हैं वो ठीक है, रीजनेबल है, और एक्चुअल रिजल्ट उसके बावजूद अलग हो सकते हैं जो रिजल्ट हमने फोरकास्ट किए हैं. तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ 1 मिनट के लिए. इसमें कोई क्वेश्चन आपका हो रिगार्डिंग SA3400, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. So if there is no question, then I should go back to the previous question because Chirag ji का एक question है इसके अंदर. Can you discuss the example of depreciation? Let me go back. एक बार फिर से समझते हैं इसको. चलिए देखिए हुआ क्या है इसके अंदर, समझने की कोशिश कीजिएगा. There is a partnership firm. You are the tax auditor. In the books, depreciation is provided in accordance with Section 32 of Income Tax Act. Now, this is the problem. Why this is the problem? Partnership firm needs to comply accounting standard 10, and it says depreciation should be provided as per useful lives. Section 32 is not meant for books of account or financial statements. So what is the conclusion? Qualify from PCB. चिराग जी अभी क्लियर है आपको? Shall I proceed, Chirag ji? Is it clear? Or any other person who wants to still have a question, most welcome to ask. तो ये जो सामने अभी आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये कल भी मैंने डिस्कस किया था. दिस इज वन ऑफ द ग्रे एरिया व्हिच इज प्रेवलेंट कस्टमरली सिंस इयर्स नाउ. बट यस, नाउ वी हैव टेक कॉल एंड मेक द करेक्शंस. एटलीस्ट क्वालिफाई करना शुरू कीजिए. So let us move to the next case study. Case study number 5 was over. Case study number 6. Now, what this case study says, Mr. A is the principal auditor of XYZ Limited. Mr. B is the auditor of branch of this company. Mr. B has issued a qualified report for this branch. Mr. A is of the opinion that he is not required, I emphasize the words, he is not required to consider the opinion of other auditor, that is branch auditor in this case. आपके लिए क्वेश्चन ये है, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में पूछूं, आपके क्लाइंट की ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस के सेपरेट ब्रांच ऑडिटर्स हैं, उनकी रिपोर्ट क्वालिफाइड हो या अनक्वालिफाइड हो, 1 मिनट के लिए भूल जाइए. क्या मेन ऑडिटर ये कह सकता है कि इट इज माय चॉइस, इट इज माय डिस्क्रिशन टू कंसीडर और डी कंसीडर द रिपोर्ट्स ऑफ ब्रांच ऑडिटर्स? क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना ही नहीं है? आंसर इज नो, ही कैन नॉट. प्लीज टेक अ नोट.
we do have section number 143, subsection 3. Section number 143, subsection 3 says that the statutory auditors have to consider the branch audit report. तो ये देखिएगा कि it is the obligation of the statutory auditors. It is the obligation of the statutory auditors that they have to consider the report given from branch auditors. And more importantly, if I discuss about this case study, यहाँ तो उसको वैसे भी कंसिडर करना चाहिए था, लॉजिकली भी. Legally it's okay. Section 143(3) gives a legal obligation. But even otherwise, let us assume for the sake of academic debate that there is no legal obligation. Even then, he should have considered, because the report of branch auditor is qualified. Such qualification in the branch audit report can have a material impact upon the totality of the report. So ultimately, the conclusion is auditor cannot shy away from the branch auditor's report. He has to consider a branch audit report and document the same in working papers also. So this is something which is coming out from section number 143 subsection 3. और ये कहना गलत है ऑडिटर्स का कि ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट को कंसीडर करना है कि नहीं करना है, ये मेरी चॉइस है. It's not the question of choice, it is a question of obligation which he has to discharge in all the cases. Now, case study number 7. The company ABC Limited is a listed company, and he has appointed, this company has appointed 4 joint auditors for the financial year 21-22. 3 of these auditors have issued an unqualified report, but one of them has issued a qualified report. The management of the company is contending that majority opinion is binding upon individual auditor, and accordingly he cannot issue qualified report. तो अगर एक कंपनी ने ज्वाइंट ऑडिटर्स अपॉइंट किए हैं, तो मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ, मैं स्क्रीन पर लिखता हूँ इसको. तो 4 ज्वाइंट ऑडिटर्स थे. मिस्टर ए, he issued qualified report. Mr. B, he issued unqualified report. And then give me a moment. Then we have Mr. C, he also issued unqualified report. Then we have Mr. D, he also issued unqualified report. So now there are 4 joint auditors. 3 of them issued unqualified report. Mr. A issued qualified report. Now shareholders or the management, they are insisting that because majority auditors are issuing unqualified report, Mr. A also needs to issue unqualified report. Is it correct? क्या शेयर होल्डर्स ये कहते हैं या मैनेजमेंट ये कहता है कि मेजोरिटी ओपिनियन के हिसाब से ही मिस्टर ए को अपना रिपोर्ट इशू करना पड़ेगा? इज इट करेक्ट? आंसर इज नो. आंसर इज नो. Each auditor is having the right to issue his or her own independent opinion. And for this purpose, you can take a note, SA 299. We do have SA 299, and SA 299 says that majority opinion is not binding upon other auditors. So that means the statement given over here that people are insisting that you have to issue nothing but the same opinion which other joint auditors have issued in majority, that is wrong. Because simple reason is majority opinion cannot bound your independence. तो आप अपना रिपोर्ट अलग से इशू कर सकते हैं, और वो इशू जो होगा वो अपना ओपिनियन होगा, चाहे वो क्वालिफाइड हो चाहे अनक्वालिफाइड हो. Now I have a small question, and if possible for you, please reply back in chat box. Is there any provision in Companies Act or FEMA for joint auditors? क्या कंपनीज एक्ट में और फेमा में कोई प्रोविजन है ज्वाइंट ऑडिटर्स को लेकर? एनी आइडिया? लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट. क्या कंपनीज एक्ट में कोई प्रोविजन है ज्वाइंट ऑडिटर्स को लेकर? एनी आइडिया? शिरीष जी, आपकी तरफ से कोई आंसर? Is there any provision in the Companies Act regarding joint auditors? Then I will ask second question. What about FEMA? हमें पता तो हो कि ज्वाइंट ऑडिट का कहां से आ रहा है कॉन्सेप्ट. Okay, please take a note. Let us first start with Companies Act. Please take a note. We do have section number 139 subsection 3 clause B. तो 2 क्लॉजेज हैं वहां पर, मैं क्लॉज बी की बात करता हूँ. सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी कहता है the members of the company may decide, that is may resolve, the members of the company may resolve that the audit should be carried out by 2 or more than 2 auditors. तो सेक्शन नंबर 139 3B के अंदर क्या लिखा हुआ है कि मेंबर से रिजॉल्व कर सकते हैं, शेयर होल्डर से रिजॉल्व कर सकते हैं कि उनका ऑडिट 2 या 2 से ज्यादा ऑडिटर्स करें.
So what you need to understand, companies that is having the enabling provisions to appoint joint auditors, number one. So appointment of joint auditor is not mandatory. पहले तो ये बात ध्यान देने वाली है, कंपनी लॉ ने कहीं पर भी मैंडेट नहीं किया कि you have to appoint joint auditors. It is your discretion to appoint joint auditors, and for this purpose we have the enabling provision in section number 139 subsection 3 clause B. मैं स्क्रीन पर लिखता हूँ इसको. So if I go to Companies Act, I do have enabling provision, and this is section number 139 subsection 3 clause B. एक चीज, हाउ अबाउट फेमा? फेमा में कुछ है इसके लिए? एनी आइडिया? इज देयर समथिंग इन फेमा? अनिल जी, आपको ये आंसर? रमेश जी, चंद्रमोहन जी, चिराग जी, इज देयर समथिंग इन फेमा? लेट अस टेक अ सिचुएशन. In India, say we have Microsoft Limited India, ठीक है, and it is having FDI 100% from Microsoft USA. एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा ठीक कर देते हैं इसे. Now, what happened? Microsoft PLC USA instructed its Indian arm to appoint, say, PwC as its auditors. मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ. Now, what does FEMA says? In such cases, Microsoft India Limited also needs to appoint local, I should not say local, domestic known multinational firm as auditor. तो मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए ग्लोबल मैंडेट है, जो कि नॉर्मली होता है, ग्लोबल मैंडेट है कि आपने ऑडिट जो है पीडब्ल्यूसी से कराना है या डेलोइट से कराना है, तो उस केस में फेमा का ये रिक्वायरमेंट है कि ऐसे केसेस के अंदर जो इंडियन एंटिटी है जिसके अंदर 100% एफडीआई या एफडीआई है, तो वहां पर उन लोगों को एक नॉन मल्टीनेशनल ऑडिट फर्म को भी अपना ऑडिटर अपॉइंट करना होगा, एंड दिस विल देन बिकम अ केस ऑफ ज्वाइंट ऑडिट. तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कंपनी लॉ में इनेबलिंग प्रोविजन है, फेमा के अंदर मैंडेटरी प्रोविजन है. और मैंडेटरी प्रोविजन कब इन्वोक होगा? जब ग्लोबल मैंडेट है इंडियन एंटिटी को कि आपको एक मल्टीनेशनल ऑडिट फर्म अपॉइंट करना है. So the very moment they will appoint multinational audit firm, this FEMA provision will be triggered, and they also need to appoint some non-multinational audit firm as their auditor, and this will be a case of joint audit. And for joint audit, what is the main principle? The main principle is majority opinion is not binding upon other auditors. Each audit firm, each auditor can express his or her own individual opinion. श्री जी, अगर बात करें यहाँ पर, if joint auditors are giving their separate opinions, obviously we will have multiple reports. Else there will be common report. In real world, generally what happens, the auditors sit together, they divide the work, and on the basis of work allocation document, that is the division of work, they come to a common consensus. But if yes, in rarest of the rare cases, if common consensus is not achieved, then we will have multiple reports. These multiple reports will be put up at AGM for adoption thereof. तो वो प्रोसेस फिर हर रिपोर्ट के लिए चलेगा. Am I clear, Sirish ji? Now come to this case study number 8. The senior partner of ABC and Associates, a CA firm, calls upon the audit assistant and instructed him to follow the same materiality level as adopted during the last year, unless the internal control system has been deteriorated substantially. Comment. सिंपल सी बात क्या है क्वेश्चन में, जो सीनियर पार्टनर साहब हैं वो कहते हैं कि जो लास्ट ईयर मटेरियलिटी था वही मटेरियलिटी आप इस साल भी कंसीडर कर लो, अनलेस एंड अनटिल
internal controls are deteriorating. तो इसको अगर थोड़ा सा और आसान करें तो क्वेश्चन ये बनता है, whether materiality is dependent, whether materiality is dependent merely upon internal control system. क्या मटेरियलिटी केवल इंटरनल कंट्रोल्स पे डिपेंडेंट है और फैक्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता? यस और नो? So materiality can be dependent upon many other factors also. For example, legal requirements like Schedule 3. For example, accounting standards. For example, my professional judgment. So the concept here is, what you need to understand, the senior partner is wrong. Materiality need to be reviewed on year by year basis, and it should be based upon all the factors put together, not merely on internal control system. और आपने मटेरियलिटी को डिराइव कैसे किया, मटेरियलिटी को इवैल्यूएट कैसे किया, दिस मस्ट बी इन योर वर्किंग पेपर फाइल. So let's take the last case study of the day. As a result of analytical procedures, the independent auditor determined that the GP ratio has declined from 35% in the preceding year to 30% in the current year, and accordingly advised the management to disclose the same in the notes to accounts and express the opinion about going concern of the enterprise. Comment. आपको लगता है ऑडिटर ठीक कर रहा है? यहाँ पर जीपी रेशियो जो है 35% से 30% पे आ गया. ऑडिटर कहता है कि जीपी रेशियो में गिरावट है, डिक्लाइन है, तो ऐसा लगता है कि गोइंग कंसर्न जो है वो एडवर्सली इंपैक्ट हो रहा है. इज ही करेक्ट? Is he correct? Answer is no, it's not correct. Why? GP ratio is merely one of the indicators. There can be many other reasons to mitigate the impact of this GP decline. तो आपको holistic view लेना है, individualistic view नहीं लेना है. We have to deep dive and find whether other reasons are there or not. So there could be some other financial indications, operating indications also. And if GP ratio is declining, and that too in my case, if you see the example, the decline in GP ratio is not very big decline, 35%, 30%. तो बहुत ज्यादा भी नहीं लगता देखने में कि गिरावट है. So we have to take a holistic view. Merely on the basis of a fluctuating GP ratio, you cannot comment and claim to a reason that going concern is somehow inappropriate. You have to deep dive. आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा, मटेरियलिटी को हम कैलकुलेट कैसे करें? How can we calculate materiality? There can be many things to calculate. Can we have some simplistic way of calculating materiality? Can we have some simplistic ways of calculating materiality? Any idea? आप अभी कैसे करते हैं मटेरियलिटी कैलकुलेट? आप है ना ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. इसको मैं मेल नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू मेल दिस. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. नॉर्मली वी मतलब बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बट वन ऑफ द मेथड इज दिस थिंग. So we have this Norwegian ways of calculating materiality. These are very popularly used methods. So you can have many benchmarks, percentage of sales, percentage of total assets, net worth. That is your wisdom. In real words, if I say materiality is highly subjective concept. Different people have different ways of computing materiality, and whatever way you're adopting, please always document it. Some of the CA firms, and even I must say some of the big CA firms, are using Norwegian Research Council materiality calculation methods. So there are two rules. One is single rule method, other is variable size rule method. So generally this variable size rule method is used. But yes, still single rule method can be also used. But if you have, I should say, small clients, if you have small clients, you can use single rule method. For example, the materiality rules can be defined as 5% of pre-tax income, 0.5% of total sales, 1% total shareholders equity, 1% total revenue. This is also possible. Or you can use variable size rule method. Dollars you need to convert into rupees. 2% to 5% of gross profit. If the gross profit is less than $20,000, you can compute into equivalent terms of rupees. 1% to 2% of gross profit. If gross profit is more than $20,000 but less than so and so. So this is a slab of materiality based upon gross profit size. In real world, people either use single rule method or variable size rule method or combination of both. So depending upon your professional wisdom of your client circumstances, you can apply these lab or different rules as the case may be. So ultimately, what I'm trying to convey,
there is no rule of thumb for materiality computation, but whatever rule you are adopting for your client, please always document this rule in your working paper file. And if I go to Schedule 3, Schedule 3 is having a Division 1 for accounting standards and Division 2 for Ind AS. Schedule 3 in accounting standards says that any item of income or expense, any item of income or expense, which is more than the highest of, 1% of revenue or rupees 1 lakh shall be separately disclosed. This can also be taken as a materiality parameter. If you go to Ind AS, in Ind AS, what is the Schedule 3 saying? Any item of income or expense which is more than 1% of total revenue or rupees 10 lakhs. So in AS it was 1 lakh, in Ind AS it is 10 lakhs, shall be separately disclosed. This also can be taken as a benchmarking. So depending upon case to case, you have to have different materialities. So what I'm trying to make, there can be two materialities. One is materiality for the financial statements as a whole, and one is the materiality for various items of the financial statements. So depending upon case to case, it could be either the overall materiality or it could be the performance materiality. So when you have the materiality on item by item, it goes to performance materiality. The benchmark would be your choice depending upon circumstances, but whatever benchmark you are adopting, please always document this benchmark in your working paper file. So from my side, this is the today's discussion, whatever procedures I could have discussed in the given time. If you have more questions, you're most welcome to ask. I'm stopping screen share. So if you have some questions, I would be happy to answer those questions. As far as PPTs are concerned, I will send the PPTs to Vijayji maybe tomorrow morning, and then you can have this PPT reference. And case studies, whatever I have discussed today and discussed yesterday, I will send all the case studies after compiling in a bunch once the sessions would be concluded, that is after day 4. So Vijayji, any other? एक query है रमेश मिश्रा जी का, any guidance note issued by ICI on material? There is no guidance note, there is a standard itself, SA number 320. So what I discussed here in a summary is SA 320 only. So what you can do, you can go to ici.org and download SA number 320. There you will find guidance on how to compute materiality. The same standard I have discussed here in a summarized manner. Any queries, please? Other queries are not there if I see the chat box. Chandramohan ji ka aaya hai, when and how to use performance? Depends upon item by item. Na. In your say P&L account, in P&L account you have several items like payment of managerial remuneration, you have depreciation, then you have payment of rent. So when you compute materiality for these items, it will be a performance materiality on item by item basis. So for example, if the rent payment is less than the materiality threshold, you need not check it. You can ignore it. So the turnover is say 1 crore and rental payment is less than 1% of 1 crore. Don't check this, ignore this because it is immaterial. But what you need to understand, several immaterial items, when aggregated, may become material. Then in those collection of items, you may apply sample checking. तो वहां पर आप लेजर्स को मर्ज करके सैंपल चेकिंग कर सकते हैं. विजय जी म्यूट हैं आप. मैंने अनम्यूट का विंडो ओपन कर दिया है. किसको अनम्यूट करके अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं. आज विजय जी ऐसा लगा मुझे, हाँ जी, आज भी और कल भी, मतलब आफ्टर सो मेनी इयर्स आई यूज्ड टू टीच सीए फाइनल लॉन्ग टाइम बैक, मे बी 2003 2004. अभी आपने ना कल और आज में ऐसा मुझे याद करा दिया है, हिस्टोरिकली आई एम इनटू द टाइम मशीन नाउ. ऐसा लग रहा है कि मैं सीए फाइनल को दोबारा पढ़ा रहा हूँ. सर फाइनली ये सब इतने आते हैं. अभी ये मैंने 30 साल पहले पास किया हुआ है. अभी ये सब अपडेट कहाँ से होता है रेगुलर? ठीक है, ऑडिट स्टैंडर्ड्स आई वाज फोर्स टू रीड बाय माय वन टाइम ब्रांच चेयरमैन. जब ये 700 रिवाइज आया था हाँ 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 आज से 8-10 साल पहले, हाँ जी तो कमेंट्स मंगाते हैं इंस्टीट्यूट वाले ब्रांचेस से. हाँ जी हाँ जी. हमारे ब्रांच चेयरमैन ने पूरा सेट मेरे को भेज दिया, विजय सर आप मेरे को कमेंट्स बना के दे दो.
तो उसकी वजह से हम लोग पढ़ पाए, नहीं तो इतना ध्यान कहाँ जाता है। बट आज मैं ये कहूंगा कि आज का जो डिस्कशन हुआ है ना, इसमें से जो सबसे बड़ा टेक अवे मुझे लगता है, जो टेक अवे हम सब लोगों को लेना चाहिए, वो सैम्पलिंग है। जब मैं थाने में आया था आपके पास, आपसे बात की थी, तब भी मैंने कहा था कि सैंपल चेकिंग हम लोग है ना दिल से करते हैं, दिमाग से नहीं करते हैं। आई थिंक दैट मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर कि वी शुड हैव अ प्रॉपर मैथमेटिकल टूल फॉर सैंपल चॉइस। राइट, ठीक है। एंड बिफोर वी कंक्लूड, वन रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, आई हैव शेयर्ड द व्हाट्सएप लिंक। अगर कोई ज्वाइन नहीं किया है तो आप शेयर कर सकते हो, या तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप करिए, आई विल ऐड यू टू द ग्रुप। तो ठीक है सर, आई थिंक दिस इज ऑल। किसी को और क्वेश्चन है नहीं? ठीक एंड सर। we'll meet on next Tuesday on the 12th यस सर। for the third session. And यस। friends, the fourth session will not be on the 13th, it will be on the 18th. Please note that. The fourth session will not be on the 13th, it will be on the 18th. Details will be sent. Again, for this also, once I get the PPT, mails will be sent to everybody. Thank you. भरत भाई, कुछ बोलना है आपको? नहीं। चलिए।